बस को ट्रांजिशन करो, गोले गोले कर दिए क्या? आपको मैं क्या इतना बड़ा दिख रहा है? बड़ा दिख रहा है। बड़ा नहीं है। ओके, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया। अपना सब हो जाए, छोटे हो जाए, बड़ा हो जाए, तो ठीक है ना? लाइव कर दिए क्या? लाइव कर दिए। Yes, very good morning, my dear friends. Oh yeah, good morning. Sir, good morning, sir. Wonderful. How was your day one of all the classes? Enjoyed? Tired? Tired? एक ही दिन में? अरे बाप रे, और यही काम अपने को नेक्स्ट 6 महीना करना है कंटिन्यू, और 6 सब्जेक्ट के साथ. नाइस. सो टैक्सेशन, देन लॉ, देन accounts. Good. I think all 3 different subjects altogether, no? In the morning you get to listen what are the tax rates. Afternoon, after that you get to listen what are the company law provisions. And after that you get to listen more of accounting standards. Barabar? Okay, brilliant. Have a great journey. Come on. Sorry. Let's get back, my dear friends. So friends, yesterday we discussed some interesting points about basics of income tax. Especially we understood about what are the sources of income tax law. We have discussed about what is tax. We spoke about what is direct tax, what is indirect tax. थोड़ा सा basic हमने discuss किया है. यहाँ तक clear हमने जो बात की अभी तक? चलो बेटा. Today we will talk lot of interesting points. Especially we will talk some points related to tax rates also. Are we ready, everybody? बेटा बोलो. Good. What is tax? Tax होता क्या है? Tax is a basic source of revenue to the government. Tax is a basic source of revenue to the government. Is it mandatory or optional? Mandatory. किसने बोला mandatory? नहीं, पूरा लैंग्वेज आना चाहिए. Entry number 82 of Union List of 7th Schedule to Article 246 of the Constitution. Exactly, of course. सर समझ में आ रहा ना बेटा? अगर कोई पूछ रहा है टैक्स ऑप्शनल है मैंडेटरी, ऑब्वियसली मैंडेटरी है, बिकॉज गवर्नमेंट हैज गॉट द पावर, एंड दैट पावर इज कमिंग फ्रॉम एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल टू आर्टिकल 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. डन? डन. दैट इज what is from where government has got power to levy income tax, and the tax what we pay is a basic source of revenue to the government. And tell me, what will government do with that money? बोलो बेटा, गवर्नमेंट क्या करते हो पैसे से? They use it for defense, education, health care, infrastructure. वो सब काम गवर्नमेंट ये पैसे से करते. बराबर है ना बेटा? बोलो ना यार. Good, perfect. Next, an interesting question. What are the 2 types of taxes? Direct tax and indirect tax. What is the difference between direct tax and indirect tax? Direct taxes are those taxes where impact and incidence is on same person. Indirect taxes are those taxes where impact and incidence is on different person. क्या है बेटा words? बोलो बोलो बोलो. Direct taxes are those taxes where impact and incidence is on same person. Indirect taxes are those where impact and incidence is on different person. बराबर है ना बेटा? दोस्तों, इंपैक्ट का मतलब क्या होता है? बोलो. इंपैक्ट का मतलब है हु इज लायबल टू पे. इंसिडेंस का मतलब क्या है?
who actually pays. Who is liable to pay, who actually pays, both are same in case of income tax. But in case of indirect taxes, both are not same, both are different. बराबर है ना बेटा? दोस्तों बताओ ना यार. Now tell me, when we go to a hotel, hotel fellow is charging us GST. Who is liable to pay the GST? Hotel owner. But who actually pays? Excellent. Clear है सब लोग? नेक्स्ट, अगर मेरा टर्नओवर 1 करोड़ रुपए है, नेट प्रॉफिट 30 लाख रुपए है, कौन सी फिगर पे जीएसटी लगता है? जीएसटी इज ऑब्वियसली ऑन 1 करोड़, बट इनकम टैक्स इज ऑन. एग्जैक्टली. नाउ इफ समबडी इज टेलिंग यू दो टैक्स पे करना है क्या? आंसर इज यस. 1 करोड़ पे जो टैक्स पे करना है, जेब से थोड़ी पे कर रहे हैं यार. वी आर कलेक्टिंग फ्रॉम कस्टमर. अदरवाइज इट इज कॉल्ड वंडरफुल शिफ्टिंग ऑफ टैक्स बर्डन. टैक्स बर्डन को शिफ्ट कर रहे हैं ना बेटा. अरे आपके खुद के पास, आपके पास रिसीट है, आपके पास प्रूफ है यार. एग्जाम्पल, एक्सपर्ट इज गिविंग सर्विस टू यू. हु इज लायबल टू पे जीएसटी इज एक्सपर्ट, बट हु इज एक्चुअली पेइंग? यू आर ओनली एक्चुअली पेइंग, बिकॉज इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स द बर्डन इज शिफ्टेड टू द एंड कंज्यूमर. अरे दोस्तों समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? पक्का बेटा? गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ इनकम टैक्स लॉ? बोलो फटाफट. इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल्स 1962, एनुअल फाइनेंस एक्ट. नेक्स्ट, notifications and circulars, judicial pronouncements. Friends, are we all clear with that? All of us? Exactly. Come on. What is the third one? Annual Finance Act. How many times it comes in a year? Only once. Common sense. They only says Annual Finance Act. एक ही बार आता है. Annual Finance Act. एक ही बार आता है ना? What is the starting part of the Finance Act? Budget. Then budget will become, how will the budget becomes finance bill? Approved by both houses of parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha. Then the budget will become finance bill. Approved by Lok Sabha and Rajya Sabha, then it becomes finance bill. Ruko sira. Then the finance bill is signed by the president. Technically we call it as finance bill will receive the assent of president. ASSENT. Assent means signed, approved. Once the finance bill get the assent of president, finance bill will become finance. That's it. बराबर है ना? अपने एग्जाम कौन से साल में? कौन से साल में है? That's it. 2024. Will budget 2024 apply to your exam? Which year you write exam? That year budget will not apply to you. For you, what will apply is Finance Act 2023. Be very clear on it. If anybody is talking to you about Finance Act 24, tell them after I write exam I will study. Till that time don't tell me. बराबर है ना? चेंजेस आएंगे. फॉर एग्जाम मैं आपको बोलूंगा टैक्स रेट 5% है. अगर वो टैक्स रेट 10% हो गया, फिर आप मुझे बोलेंगे शिवा सर आपने 5 पढ़ा है, बाहर लोग बोल रहे 10%. हाँ, बाहर लोग 10% जो बोल रहे वो सही है प्रैक्टिकली, बट आपके एग्जाम के लिए नहीं. Some sound please. Brilliant. Thank you so much. Next, does income tax apply to Jammu and Kashmir? Will income tax apply if I do some activity on water? Inside the water? In the airspace? How are you telling this answer? Because India, income tax applies to whole of India. Is India defined? What is India? Which section defines India? Section 2 clause 25A defines what is India. Bolo beta, India covers territory, territorial waters, seabed and subsoil underlying such water, continental shelf or exclusive economic zone, and airspace above territory and territorial waters. I think we are fully clear with that. समझ में आया ना बेटा? अरे यार सिंपल सी बात है यार. इंडिया covers what? See, just apply your logic. India covers what? Territory, which is the landmass, territorial waters, seabed and subsoil underlying such water, continental shelf or exclusive economic zone, and airspace above territory and territorial waters. So that is covered in section 225A, the definition of India. Clear with that everybody?
समझ में आ रहा है सबको? पक्का बेटा? गुड. नेक्स्ट, what is section 4, my dear friends? Chargeability section of income tax. What does section 4 say? Income earned in the previous year is chargeable to tax in the assessment year. बराबर है ना? Income earned in the previous year is chargeable to tax in the assessment year. Friends, बात करे थे बेटा, बोलो. Income earned in previous year is chargeable to tax in assessment year. What is previous year? Year in which income is earned. जिस साल में इनकम कमाए बेटा उसको क्या बोलेंगे? Previous year. And that income is chargeable to tax in assessment year. Clear? Which section defines previous year? Section 234 and section 3. Which section defines assessment year? Section 2(9). 234 and section 3 defines what is previous year. Section 2(9) defines what is assessment year. I think we are totally clear on this. Everyone? चलो बेटा, अब ये कुछ interesting चालू करते हैं. Till this point is what we discussed in the previous class, where we understood the basic of what is taxation. But from today's class, the real game will begin. Ready? आज से जो बात करेंगे next level ही रहेगा. Ready? Come on guys, listen. There's an interesting word called ASS, ESS, EE. Technically we call him as assessee. What do we call him, my dear friends? Assessee. Now the interesting point is, who is an assessee? Who is an assessee? Sir, under income tax, we call the taxpayer as a assessee. इनकम टैक्स में जो जिसको टैक्स पे करना है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? assessee. But this word assessee is a very big definition which we need to understand in detail, which we'll talk now. Are we ready? First listen. Listen very clearly. Every person is an assessee. Wait a second. Every assessee is a person, but every person is not an assessee. क्या लिखा बेटा वापस बोलो. Every assessee is a person, but every person is not an assessee. इसका मतलब क्या है? Every assessee, हर assessee पर्सन होता है, बट जरूरी नहीं है कि हर पर्सन. बड़ा क्वेश्चन है सबसे पहले कि पर्सन कौन है, फिर हम बात करेंगे assessee कौन है. समझ में आ रहा ना बेटा? अरे अब ये मत बोलो सिंपल आंसर, हु इज लायबल टू पे टैक्स assessee, हु इज नॉट लायबल टू पे टैक्स इज पर्सन. ये जनरल आंसर है जो अपने दिमाग में घूमता है, बट दैट इज नॉट द आंसर. क्लियर फ्रेंड्स? चलो पहले क्या डिस्कस करेंगे हम? अरे पर्सन यार, this word person is defined by a brilliant section called 231. Which section defines person? 231 defines who is a person, and it starts with the word person includes. Sir, I hope you know that in definitions there are three types of definition: inclusive definition, exclusive definition, exact definition. Exact definition start with the word means. Inclusive definition start with the word includes. Exclusive definition starts with the word excludes. क्लियर है क्या? मैं आपको सिंपल वे में मीनिंग समझाऊंगा जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस. दोस्त आपका नाम क्या है? शुभम. ओके, लेट मी टेक अ स्मॉल एग्जांपल लाइक दिस. लेट्स से आई एम आस्किंग शुभम, शुभम डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड? ही गिव अ वंडरफुल स्माइल. देन आई अंडरस्टूड. आई आस्क्ड हिम व्हाट इज योर गर्लफ्रेंड नेम? देन शुभम टोल्ड, सर माय गर्लफ्रेंड मींस 1 2 3. What does that mean? That's called what definition? Just joke. Okay? Don't take seriously. Exact definition. That means only those three are his girlfriends. Nothing more, nothing less. अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा यार? Shubham, just for fun. Yeah, done. Thank you so much. Next. Let's say next situation. I'm asking Shubham, who is your girlfriend? Shubham is telling, my girlfriend includes 1 2 3.
आई थिंक आपको मीनिंग समझ में आ रहा है. मतलब इसका मीनिंग क्या है? वो बोल रहा है सर ये 1 2 3 तो गर्लफ्रेंड है और भी है जो मैं आपको नहीं बता रहा हूं अभी. समझ में आ रहा है क्या? सबसे डेंजर डेफिनेशन है लास्ट वाला, दैट इज एक्सक्लूड्स. आई एम आस्किंग हु आर योर गर्लफ्रेंड्स. शुभम इज टेलिंग माय गर्लफ्रेंड एक्सक्लूड्स 1 2 3 4 5. आई थिंक आपको समझ में आ गया. मतलब ये 1 2 3 4 5 छोड़ के बस. I think the meaning of these words is very clear for you, all for fun. But the whole point is that there are 3 types of definitions called inclusive, exclusive, exact. Why I gave this example? Because in majority of the taxation provision, you will find with the word includes. The reason because अभी मैं आपको 7 8 points बोलूंगा. What is covered in definition of person? But other than that, something else also is included in the definition of person. Other than that, something else also included in definition of person, which government if they want to add in the future, they will add. अगर means बोलेंगे तो exact बन जाएगा ना, उसके अलावा और कुछ नहीं. इसलिए उन्होंने क्या यूज किया है? Includes definition. Clear? Now listen. Person includes what? Listen very clearly. Person includes individual. चलो बेटा, person includes what? Individual. Second one, HUF. Individual means example, natural person. Correct ना? Second one, HUF. सुने ये वर्ड HUF? सर HUF फुल फॉर्म क्या है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. पता है ना कब बना था अनडिवाइडेड फैमिली? कोई आइडिया? Can you create HUF? Can Shubham create HUF? Yes, Shubham? Answer is no. A person can form HUF only after marriage and children. Not when parents and sisters. His father can create HUF. अरे समझ रहे आप मेरी बात? HUF stands for what? Hindu Undivided Family. It's a very wonderful concept. We have got one act called Hindu Succession Act. Like how an individual is there, they can also be a family business which is running under HUF, Hindu Undivided Family. And in India, my dear friends, we have 2 laws. I'll tell more for your knowledge. There is one law called मिताक्षरा law. आपको फाउंडेशन बता क्या? ये नहीं था क्या? ठीक है. One is called मिताक्षरा law, one more is called दयाबगा law. दयाबगा law is there in West Bengal and Assam. ये सब नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ, सुन लो. दयाबगा law is in West Bengal and Assam. What happens in those states is that when father is there, children are there. Children will not get right in the property unless father dies. Children will not get right in the property unless father dies. But Mitakshara law is prevalent entire India except your West Bengal and Assam, which says that every child will have a right in the property immediately after birth. Immediately after birth, they'll have a right in the property. समझ रहे क्या? आप लोग सुनोगे मेरे दादाजी का प्रॉपर्टी है, इस पे मेरा हक है, तो दिखाते ना टिपिकल बॉलीवुड मूवीज में. एग्जैक्टली सिमिलर लॉजिक है. समझ में आ रहा है क्या? एवरीवन, ऑल ऑफ अस गेटिंग क्लैरिटी? आई विल गिव अ स्मॉल एग्जांपल सर सो दैट आपको फुल क्लैरिटी आ जाएगा. सी व्हाट हैपेंड, माय मदर्स फादर, माय नाना जी, ही हैड सम प्रॉपर्टीज इन HUF. HUF के नाम पे है प्रॉपर्टी, पर्सनल नाम पे नहीं है. HUF के नाम पे अलग है सर. HUF अलग है, पर्सनल अलग है. एग्जाम्पल, मेरे पास 2 पैन कार्ड है. एक तो शिवतेजा करके एक पैन कार्ड है, एक और पैन कार्ड है शिवतेजा HUF. सर पैन मतलब पता है क्या आपको? श्योर ना? वो तो समझाने की जरूरत नहीं है ना. पैन का फुल फॉर्म क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर. इधर किस किस के पास पैन कार्ड है? अभी नहीं, मतलब है. अरे यार सब ऑलमोस्ट मेजॉरिटी पास है. मैं क्या ही समझाऊं पैन के बारे में. पैन तो इट्स अ पैन, इट्स अ रिकॉग्निशन इन इनकम टैक्स. जैसे आपको CA इंस्टीट्यूट में WRO नंबर है ना, वैसे मेरे पास एक मेंबरशिप नंबर है बिकॉज आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाइड. इन द सेम वे इन इनकम टैक्स द रिकॉग्निशन इज योर पैन. पैन स्टैंड्स फॉर परमानेंट अकाउंट नंबर. हाउ मेनी डिजिट्स? 26. हाँ 10.
कोई पैन कार्ड निकल रहा है बैग में से, अच्छा 10 पक्का, आपको याद है आपका पैन नंबर, बढ़िया। आपको याद नहीं आपका पैन, पैन ही नहीं है, गुड। शुभम पैन है क्या, नहीं है, क्यों बेटा, ले लेना यार, अभी ले लो, ठीक है। पैन इज ए 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड, 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड। अल्फा न्यूमेरिक मतलब अल्फाबेट्स भी है, नंबर्स भी है। अरे समझ में आ रहा है क्या? अरे यार जो आपका जीएसटी नंबर होता है ना, जीएसटी नंबर 15 डिजिट का होता है, जिसमें फर्स्ट 2 नंबर्स जो होता है वो स्टेट कोड होता है। जैसे तेलंगाना में 36 है, महाराष्ट्र में 27 है। महाराष्ट्र में जीएसटी नंबर किसी का भी देखो आप, स्टार्टिंग में 27 ही होता है। 27 के बाद जो 10 नंबर होता है ना, वो पैन होता है। आई एम 100% श्योर, if you want to check any GST number starting in Maharashtra, you will find 27 only. I'll guarantee on this. It is called state code. समझ रहे क्या आप मेरी बात? ठीक है, मैं पैन का डिस्कशन क्यों किया आपके साथ, कम बैक। शिव तेजा, इंडिविजुअली आई हैव गॉट वन पैन, HUF का अलग पैन होता है, बिकॉज HUF सेपरेट पर्सन। समझ रहे क्या एवरीवन सर? Now the example what I was telling you is practical example. My mother's father, my Nanaji, what happened was he had some properties in HUF name. What name? उसके ऊपर राइट किसको है? मुझे है क्या? नहीं, थैंक यू सो मच। किसको राइट है? मेरे नाना जी को है। My mama has got right and my mother also has got right. A girl will have right in the HUF even after marriage. अरे समझ रहे क्या? आपका शादी होने के बाद आपके पापा की प्रॉपर्टी पे आपको हक है। दैट इज इंडियन हिंदू लॉ। समर स्माइलिंग, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है क्या आपको? नाउ व्हाई आई एम गिविंग दिस एग्जांपल, बिकॉज व्हाट हैज हैपेंड इज व्हेन माय ग्रैंडफादर पास्ड अवे, व्हेन माय नानाजी एक्सपायर्ड, दैट प्रॉपर्टी हु हैज गॉट राइट? मामा के पास भी राइट है, मेरी मम्मी के पास भी राइट है। माय मामा व्हाट ही हैज डन इज ही हैज कम टू माय होम वन डे asking my mother, if you are interested, can you sign relinquishment deed? क्या deed है वो? Relinquishment deed. Relinquishment deed मतलब giving up the right. समझ रहे आप मेरी बात? अरे यार उसके ऊपर हक किसको है? मामा को भी है, मम्मी को भी है। बट मेरे मामा क्या पूछे मेरी मम्मी से, relinquishment deed साइन करने को इंटरेस्ट है क्या? आपको कुछ एक्सपेक्टेशन है क्या? समझ रहे क्या? अरे सिंपल लैंग्वेज, आपको कुछ चाहिए क्या या छोड़ देंगे प्रॉपर्टी? छोड़ देंगे बोले तो नहीं होता ना यार, डॉक्यूमेंट पे होना चाहिए ना। So he asked, will you be interested to sign what document? Relinquishment deed. Relinquishment means give up your right. My mother asked my father, क्या करना है? पापा बोले साइन करो चुपचाप, अपने को नहीं चाहिए कुछ भी। अरे समझ रहे क्या आप मेरी बात? So my mother, she has signed the document telling relinquishment deed. That means the moment she signed that document, after that, henceforth that property, whole and sole owner will be. That's it. HUF का कहानी समझाने के लिए ऐसा बोला आपको मैं, जो प्रैक्टिकली हुआ है, इसके लिए वो एग्जांपल दिया मैंने। बराबर है ना? बट इमेजिन इफ माय मदर सेज, मुझे भी हिस्सा है इसमें, मुझे हाफ प्रॉपर्टी चाहिए, माय मामा कैन नॉट डू एनीथिंग, ही हैज टू गिव, बिकॉज दैट इज HUF प्रॉपर्टी। दैट इज द पावर ऑफ HUF। थैंक यू सो मच सर। आप कुछ रिएक्शन देंगे तो मुझे अच्छा लगता है, वरना मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या पढ़ा रहा हूं। डन, आर वी क्लियर विद दिस? Get back guys, come on, get back. Person includes what? Number 1, individual. Second one, HUF. Sir, एक बार क्या हुआ था? I told you already. I have an office in Hyderabad. We have an office in Bombay also. I'm a practicing chartered accountant. I'm doing CA practice since last more than 10 years. After I became CA in 2010, I worked for 2 years with EY, Ernst & Young Corporate. I worked for 2 years in the core taxation department. Left and right, we worked on tax and corporate Big Four. After working for 2 years in corporate, I came out, I started my own practice. And since last 10 years, I'm working only in tax. इसके लिए मैं बहुत सारे चीजें आपको practically बताऊंगा, because I'm somebody who has not just having theory knowledge, but I've done a lot practically. उसके लिए मैं आपको सब बताऊंगा। ये बोलने का reason क्या है सुनो अभी। When I'm telling that practically I worked a lot on this, when I was sitting in office one day, one client has come. He was coming and asking me, सब थोड़ा सा कुछ काम है सर। बोला बोलो सर क्या काम है? बोला साहब मेरे को ना एक हुफ बनाना है। बोला ये हुफ क्या होता रे? बोला फिर वो बोल रहा है सर शादी के बाद बच्चे के बाद बनाते ना हुफ। बोला शादी के बाद बच्चे का हुफ बनाते? 2 मिनट मेरे को समझ में नहीं आया वो क्या बोल रहा है। तीसरा मिनट मुझे स्ट्राइक हुआ वो क्या बोल रहा है।
वो हुफ का मतलब है HUF. वो HUF बोलने के लिए हुफ बोल रहा है यार वो. समझ रहे क्या मेरी बात? सो प्लीज डोंट टेल दैट वर्ड हुफ हुफ हुफ. मत बोलो यार, वो हुफ नहीं है, वो क्या है, वो HUF. प्लीज डोंट यूज दैट वर्ड्स हुफ. और एक बंदा है ऑफिस में, मैं बोलता है साहब एक पान बनाओ ना सर. अरे क्या पान शॉप है क्या? पान क्या है वो पैन है. वो क्या मीठा पान बनाए? नॉनसेंस. You're getting my language meaning? No. If you tell that word hoof, it sounds so funny, yaar. It sounds so funny when you tell that word hoof. It's not hoof. It is HUF. HUF stands for Hindu Undivided Family. Done. Person includes individual HUF. Then next. क्या लगता है आपको और कौन है? अरे यार कुछ तो बोलो यार. Individual, HUF, पार्टनरशिप फर्म, LLP. फर्म LLP में कुछ फर्क है क्या? फर्क क्या है दोनों में? लाइबिलिटी का फर्क है. क्या फर्क है? क्या क्या क्या? फर्म में लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है. अच्छा, LLP में लाइबिलिटी. वंडरफुल आंसर फ्रॉम BCom पॉइंट ऑफ व्यू. हॉरिबल आंसर from CA point of view. Your answer should be, in case of partnership firm, the liability is joint and several. ये क्या है unlimited? Talk time है क्या? अरे आपको समझाने के लिए फाउंडेशन में बोले होंगे अनलिमिटेड, बट अनलिमिटेड वर्ड यूज नहीं कर सकते आप. आपको यूज करना है क्या वर्ड है वो? जॉइंट एंड सेवरल. फिर स्टूडेंट बोल रहा है सर उसका मीनिंग अनलिमिटेड ही है ना. हाँ, पर वो वर्ड यूज नहीं कर सकते हम. हुफ वही है, बट हुफ नहीं बोल सकते ना. Chartered accountants students, professionals. Clear na? Done. चलो. In case of partnership firm, the liability is joint and several. LLP में क्या है बेटा? Liability is limited only to the extent of share of the partner. बराबर है ना बेटा? उसके लिए उसका नाम है LLP. Next. उसके बाद क्या है? बोलो. Company. How can you forget a company, man? Company means a company which is formed as per Companies Act 2030 or under any other or previous law or earlier law. पढ़े ना ऐसे आप लोग फाउंडेशन में? Excellent. Clear no friends? Company, artificial person, natural person. That is the reason why everywhere when you talk about fines and penalties or imprisonment or putting in jail, they'll use the word company and every officer in default. Obviously ना यार, if you tell they'll put in jail for 10 years, किसको लगाएंगे जेल में? मेमोरेंडम आर्टिकल्स को लेके जाके जेल में लगाएंगे क्या? Company is an artificial body, no? How can you take company to jail? Not possible, no? So we'll make officer in default as a responsible person. Are we clear? चलो, person includes what? Individual, HUF, firm, LLP, company. Next, और क्या है? Cooperative society. कोऑपरेटिव सोसाइटी. सुने ये वर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी? एवरीवन, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, अपार्टमेंट्स का सोसाइटी होता है, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज. नेक्स्ट, लोकल अथॉरिटी. एग्जाम्पल फॉर लोकल अथॉरिटी बेटा? अच्छा, आइडिया नहीं कुछ भी? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बेटा, इन हैदराबाद वी हैव समथिंग कॉल्ड GHMC, Greater Hyderabad Municipal Corporation. In Pune, there is something called PMC, Pune Municipal Corporation. That is called local authority. बराबर है ना बेटा? चलो, come on, repeat. Person includes what? Individual, HUF, firm, LLP, company, cooperative society, local authority. Next. They also cover something called AOP or BOI. AOP or BOI. AOP stands for Association of Persons. BOI stands for Body of Individual. Body of, let's say for example, there are two friends, Shivateja, one more person, Raviteja. Example, two friends, Shivateja, Raviteja, we both came together and we are doing business. We both came together and we are doing business.
हमने पार्टनरशिप फर्म नहीं बनाया, एलएलपी नहीं बनाया, कंपनी भी नहीं बनाया. We did not create a partnership firm, we did not create LLP, we did not create a company, but we are liable to pay tax. So we are together called as body of individuals. When will AOP word used? एक individual, एक partnership firm, एक company, तीनों मिलकर business कर रहे, then we'll use the word association of persons. But if all of them are individual, we'll call it as body of individuals. Clear बेटा? सर अगर तीन इंडिविजुअल साथ में आए, अगर पार्टनरशिप फर्म बनाए, उसको हम बीओआई नहीं बोलेंगे, विल कॉल इट एज पार्टनरशिप फर्म. इफ दे क्रिएटेड अ कंपनी, विल कॉल इट एज कंपनी. इफ दे आर नॉट क्रिएटेड पार्टनरशिप फर्म, नॉट क्रिएटेड कंपनी, बट दे आर टुगेदर डूइंग बिजनेस, देन वी कॉल इट एज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स. इन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ऑल ऑफ देम आर इंडिविजुअल्स. आर वी गेटिंग क्लैरिटी एवरीबॉडी? प्लीज स्पीक आउट माय डियर फ्रेंड्स. डन. That is the story of local authority, AOP, BY. And there's one last category of person that is called AJP, which stands for artificial juridical person. Artificial juridical person. Classic example, ICAI. If I ask you, show me ICAI, you cannot show. You can show me ICAI building. You can show me ICAI books. But you cannot show me who is ICI because it's an artificial body. बराबर है ना बेटा? One more example, trust. Trust, temple trust. For example, in Shirdi temple, there's one trust called Sri Shirdi Sai Sansthan Trust. Now tell me that Shirdi temple trust. If you ask me, show me temple trust, you can show me temple office, but you cannot show me trust. It's an artificial juridical person. Sir, in India, temples make lot of money in India, but they don't pay tax. The reason, because in India, in income tax, whatever money is put in hundi, it is fully tax free. If temples are liable to pay tax in India, the highest taxpayer in India will become Tirupati temple first. And top 10 taxpayers will be temples only. Siddhivinayak temple, Shirdi temple, they'll pay more tax than any other film star or cricketer. Clear, no friends? Tirupati temple average collection every day is 3 crores. Every day average collection is 3 crores. Per month it is 100 crores. Per annum it is more than 1,200 crores. Only in hundi. Other donations are separate. I think. Clear, no? Exactly. That's the story. That's it. That's the definition of who is a person, which is defined by which section, my dear friends? 231. Chalo beta, person includes individual, HUF, firm, LLP, company, cooperative society, local authority, AOP, BOI, AJP. AOP, association of persons. BOI, body of individual. AJP, artificial juridical person. Artificial juridical person. Juridical or judicial, meaning is same. Is that clear, na beta? That's it. Why did we learn this word person? You tell me. Every assessee is a person, but every person is not an assessee. मतलब हर person तो assessee नहीं बनेगा, but हर assessee तो इसलिए मैं आपको सबसे पहले क्या पढ़ाया? person कौन है पहले? समझ में आ रहा है क्या? अगर person कौन है अपने को समझ में आया बेटा, उसके बाद हम पढ़ेंगे assessee कौन है. ठीक है? Don't write anything first. Listen. Next half an hour, just listen. Then only we'll write. Listen. Sir, I have a question. There is one person, Mr. A, who is running a bakery. The bakery, pata hai na? Who is doing a bakery business. So let us say his turnover is 15 lakh per annum. टर्नओवर है वो, टर्नओवर 15 lakhs per annum, प्रॉफिट 2 lakh per annum. सर टर्नओवर पूरा प्रॉफिट होना जरूरी नहीं है ना बेटा, एक्सपेंसेस तो होता है ना बेटा. टर्नओवर कितना है उसका? 15 लाख. प्रॉफिट कितना है? अब आप मुझे बोलो जीएसटी किस पे लगेगा? 15 लाख. अब तो जीएसटी मेरा कंसर्न नहीं है, वो आपको समझाने के लिए मैं आपको समझाया कि जीएसटी किस पे लगेगा, कितना लगेगा, क्या लगेगा, यू लर्न इन जीएसटी.
बट आवर फोकस इज ओनली ऑन, ये भी जीएसटी भी टैक्स ही है बेटा, इनकम टैक्स. नाउ टेल जीएसटी, आई मीन इनकम टैक्स जो है, अब आप मुझे बोलो ये 2 लाख पे इज मिस्टर ए लायबल टू पे इनकम टैक्स? बोलो बेटा, क्या लगता है आपको? इनकम टैक्स भरना पड़ेगा? अच्छा, तो मेरा एक क्वेश्चन है, अगर एक बंदा है उसका सैलरी महीने को 10,000 है, पर मंथ हाउ मच इज द सैलरी? 10,000, तो पर एनम कितना हुआ? 1,20,000. उसको भी टैक्स भरना पड़ेगा क्या? अरे तो 2 लाख वाले को तो हाँ बोल रहे आप, 1,20,000 को ना बोल रहे क्या? क्या लगता है आपको? अगर एक बंदा महीने को 5,000 सैलरी कमा रहा है, साल का कितना हुआ? 60,000. उसको भी टैक्स भरना पड़ता है क्या? नहीं. क्यों? क्या लगता है आपको? किसको टैक्स भरना है फिर? क्या बेटा? जिसका 1,50,000 पर एनम का ऊपर है. ठीक है, बाकी दूसरे लोग? और कुछ आंसर? अरे कुछ तो गेस करो यार, ऐसे क्या है, मतलब थोड़ी ना है यहाँ पे ऐसा कुछ है, कुछ तो गेस करो, आपको क्या लगता है इसके ऊपर टैक्स भरना चाहिए? 5 लाख के ऊपर होगा तो तब टैक्स भरना पड़ेगा. ठीक है, ये एक थॉट है. नेक्स्ट. 7 लाख के ऊपर है तो टैक्स भरना पड़ेगा. ठीक है, गुड. आई थिंक there is a lot of knowledge coming from Google and different places. Nice. Now the point what I want to tell you is that in India the beautiful point is that in, यहाँ पे आंसर नो है वैसे, इनकम टैक्सेस in India, income tax is progressive in nature. Income tax is what in nature, beta? Progressive in nature. What is the meaning of that? I'll tell. But GST is regressive in nature. समझा क्या इसका मीनिंग है? क्या है बोलो? Wonderful. Progressive in nature means higher the income, higher the tax, lower the income, lower the tax. Regressive in nature means whatever is your income, your tax remains same. For example, my dear friends, the amount of the tax rate of Mukesh Ambani and the tax rate of Shivateja both is not the same. उसका इनकम ज्यादा है वो टैक्स ज्यादा पे कर रहा है, मेरा इनकम कम है मैं टैक्स कम पे कर रहा हूं. मेरे से जिसका इनकम कम है वो मेरे से भी कम टैक्स पे करता ना यार. बट आप मुझे बोलो, कोई रेस्टोरेंट है जहां पे जीएसटी 5% है, मैं भी जाऊंगा तो 5% ही है. मेरे से कम पैसे कमा रहा है वो भी गया तो 5% ही है. मुकेश अंबानी भी गया तभी भी जीएसटी रेट 5% ही है. दैट इज कॉल्ड रिग्रेसिव इन नेचर. समझे क्या? इनकम टैक्स इज व्हाट इन नेचर? Progressive in nature. Higher the income, that's the reason why what they have done is they have put up slabs in income tax. What do we call it? Slabs in income tax. इतना इनकम तक इतना टैक्स रेट, इसके ऊपर इतना टैक्स रेट, इसके ऊपर इतना टैक्स रेट. किस केस में क्या टैक्स रेट है? टुडे विल लर्न, विल सॉल्व. ठीक है, सबको क्लियर है? बट वो सॉल्व करने से पहले अपने को एक बहुत ही बड़ी चीज समझना जरूरी है. दैट इज हु इज एन assessee. Now listen. This word, the interesting word assessee, my dear friends, is defined by a brilliant section called 2.7. Section 2.7 defines who is an assessee, which clearly says assessee means any person liable to pay tax. Any person who is what, sir? Liable to pay tax, and includes any person in respect of whom proceedings, any person in respect of whom proceedings
have been taken up. Proceedings have been what beta? Taken up for assessment of his income. Assessment of his income or income of any other person in respect of which he is accessible, or loss sustained by him or such other person. Sir, a very, very, very interesting language. We'll elaborate in detail. Don't worry. First line में क्या लिखा बेटा? Assessee defined by which section? Section 27 defines who is an assessee. Assessee means what? Any person who is liable to pay tax. मतलब जिसको टैक्स भरना जरूरी है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? assessee है. अब आप मुझे बोलो, ये प्रीवियस एग्जाम्पल में जो मिस्टर ए है बेकरी का बिजनेस कर रहा है, उसका इनकम कितना है? 2 लाख रुपए. एंड इंडिया में बेटा आई टेल यू, इन सम केसेस 5 लाख तक टैक्स नहीं है, सम केसेस 7 लाख तक टैक्स नहीं है. किस केस में क्या है वो हम आज ही पढ़ेंगे. टुडे ओनली आई टीच यू दैट, डोंट वरी. ठीक है ना बेटा? मतलब इसका इनकम कितना है? सिर्फ 2 लाख रुपए है. इसको टैक्स भरना जरूरी है क्या बेटा? बोलो नहीं. उसको अगर जब टैक्स भरना जरूरी नहीं है, माई क्वेश्चन टू इज मिस्टर ए पर्सन? Is he a person? But is he an assessee? That's why we told that every assessee is a person, but every person need not be an assessee. वो लैंग्वेज उसके लिए लिखे. ये पर्सन है क्या? हाँ. वो assessee है क्या? नहीं. चलो get back. Assessee means what? First line. Any person who is liable to pay tax and includes. First line. Every person who is liable means any person who is liable to pay tax and includes any person in respect of whom what is taken up? Proceedings have been taken up. Proceedings have been taken up means assessing officer, income tax officer, we call him as assessing officer. Income tax में अपना नाम क्या है? assessee है. ऑफिसर का नाम क्या है? assessing officer. Assessing officer. So come on, any person in respect of whom proceedings have been taken up means who has issued notice? Assessing officer gave a notice. फिर हम assessee बन जाएंगे. समझ रहे क्या बेटा? Everyone sir, लाइन पढ़ो वापस. Every person, any person in respect of whom proceedings have been taken up. For what purpose? Assessment of his income. That means to calculate his income. Who gave notice? Assessing officer gave notice to some person for assessing his income. एक बार अगर नोटिस आ गया तो हम क्या बन जाएंगे बेटा? assessee बन जाएंगे. समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है क्या बेटा? चलिए लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है बेटा, बहुत बहुत जरूरी है. Any person in respect of whom proceedings have been taken up for assessment of his income or क्या नाम है, क्या लैंग्वेज है वहां पे? Income of any other person, income of any other person in respect of which he is assessable. Assessable means responsible. Example sir, Shivateja, I have got one son who is age 6 years old. My son name is Saharsh. Okay, he is 6 years old. Okay, now when I say 6 years old, what is he? Chotu only, but technically what do you call him? Minor. Because below the age of 18 years, we call him as minor. Now my straight question is that if minor is earning income, let me tell you that is also taxable. You might ask, how can minor earn income sir? Simple example. मैंने बैंक में FD किया, मैं practical example दे रहा हूँ. I have done FD in the bank on my son's name. On that fixed deposit, what is coming? उस पर टैक्स भरना पड़ेगा ना. वो टैक्स भरने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, बेटे के ऊपर नहीं है, मेरे ऊपर है. समझ रहे क्या मेरी बात? सर, यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग माय डियर फ्रेंड्स?
when I have put a fixed deposit in the bank on which interest is coming, on that interest, who is liable to pay tax? Shivateja, not the minor. Sir, minor income is taxable in the hands of parent. समझ रहे क्या आप? But if minor gets income by their own skill and talent, then they are only taxable. If minor is getting, वापस बोल रहा बेटा, last time listen carefully. If minor is getting income by their own skill and talent, minor को खुद tax pay करना पड़ेगा. If it is not own skill and talent, tax in the hands of parent. You might ask skill and talent क्या है सर? एक minor है, minor is acting in movies. There is skill and talent. Money has come. Who has to pay tax? Minor. एक minor है, extraordinary artist. A beautiful painting has been done. Painting is sold for 10 lakh. 10 lakhs पैसे तो आए ना? Who has to pay tax? Exactly. Now coming back to discussion. In my son case, I have done a fixed deposit. On that fixed deposit, interest is coming. First of all, is that interest taxable? पहला क्वेश्चन, वो इंटरेस्ट टैक्सेबल है क्या? हाँ. कौन टैक्सेबल, कौन उसको टैक्स पे करना पड़ेगा उसके ऊपर? मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा, बिकॉज स्किल एंड टैलेंट तो नहीं है ना बेटा. अरे इंटरेस्ट इनकम स्किल एंड टैलेंट थोड़ी आता है यार. वो इनकम पे टैक्स भरने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? मेरा है. बराबर है ना? अगर वो इनकम पे मैंने टैक्स पे नहीं किया, ऑफिसर नोटिस देगा. ऑफिसर नोटिस देगा, किसको देगा? मुझे देगा या माइनर को देगा? मुझे देगा ना, पक्का ना? अब पढ़ो. और इनकम ऑफ, यहां से देखो बेटा, मैं यहां से बोल रहा हूं, और आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर. और इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन, एग्जाम्पल माई सन, एनी अदर पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ विच ही इज असेसेबल. आप समझे क्या मीनिंग? मतलब इनकम टैक्स कैन गिव मी, इनकम टैक्स ऑफिसर कैन गिव मी नोटिस फॉर माई इनकम, or they can also give a notice to me for some other income, for some other person's income in respect of which I am responsible. आप भी समझे क्या मीनिंग? सबको क्लियर है क्या ये लैंग्वेज? एवरीबॉडी. और जरूरी नहीं कि हर बार इनकम आएगा, कभी कभी लॉस भी आता है. उसकी वजह से लैंग्वेज क्या है? और व्हाट बेटा? लॉस सस्टेन्ड बाय हिम और सच अदर पर्सन. लॉस में वी नेवर यूज द वर्ड लॉस अर्न्ड बाय हिम. लॉस अर्न्ड थोड़ी बोलेंगे यार, लॉस सस्टेन्ड ही बोलेंगे ना. खुशी से थोड़ी बोलेंगे लॉस आया मेरे को, ऐसे थोड़ी होता है यार. दैट्स व्हाई वी यूज द वर्ड लॉस सस्टेन्ड बाय हिम. आर वी क्लियर एवरीवन? चलो अब पढ़ो लैंग्वेज क्या है अभी. वापस मीनिंग समझ में आ गया ना? चलो अब एक बार याद कर लेते. एसएससी मींस व्हाट? एनी पर्सन लायबल टू पे टैक्स एंड इंक्लूड्स एवरी पर्सन, बट ट्राई करो, and includes what? Any person in respect of whom proceedings have been taken up for assessment of his income, or income of any other person in respect of which he is assessable, or loss sustained by him or such other person. समझे क्या? सिंपल लॉजिक है यार. जिसको टैक्स भरना जरूरी है वो असेसी है. पहला वाला पॉइंट. दूसरा वाला पॉइंट क्या है? जिस बंदे को इनकम टैक्स से नोटिस आया वो भी असेसी है. और नोटिस कभी कभी उसका इनकम के लिए आ सकता है, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है किसी और का इनकम है पर जिसके लिए तुम जिम्मेदार हो. एग्जाम्पल माइनर. क्लियर है? बट डेफिनेशन खत्म नहीं हुआ, पिक्चर अभी बाकी है मेरा दोस्त. देखो सेकेंड बुलेट पॉइंट. बोलो बेटा क्या हुआ? लॉस पर टैक्स आता नहीं है तो फिर क्यों दिखा रही है? अच्छा, गुड क्वेश्चन, बट आई गिव ए गुड आंसर. ओके, इफ देयर इज अ लॉस, अगर समझे बंदे के पास लॉस है 10 लाख रुपए और प्रॉफिट भी है 12 लाख रुपए, इनकम टैक्स बोलता है वो लॉस को सेट ऑफ करके बाकी 2 लाख पे ही टैक्स भरो. तो कभी कभी लॉस आए तो अच्छा ही है फ्रॉम इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज यू कैन सेट ऑफ दैट लॉस. नो, ये पर्सन इज हैविंग 2 बिजनेस. एक बिजनेस में 15 लाख का लॉस आया, दूसरा बिजनेस में 20 लाख का प्रॉफिट आया, तो ये 15 लाख को सेट ऑफ करके हम सिर्फ 5 लाख पे ही टैक्स पे करेंगे. तो ऐसा फायदा होगा ना? समझा क्या बेटा? बोलो. एक्चुअल में वी डोंट वांट टू गेट अ लॉस, बट लॉस आया तो क्या करेंगे? दूसरा इनकम से सेट ऑफ करेंगे ना यार.
क्लियर है? चलो सेकंड लाइन, एनी पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ whom proceedings have been taken up for assessment of his income or income of any other person in respect of which he is assessable or loss sustained by him or such other person. Next point. Every person who is deemed to be an assessee. Deemed to be an assessee. So name only says every person who is deemed to be an assessee. सर सुने क्या ये वर्ड डीम्ड? डीम्ड का मतलब क्या होता है बेटा? हाँ, डीम्ड का मतलब होता है अज्यूम्ड. अच्छा, एग्जाम्पल, लेट अस से फॉर एग्जाम्पल, शुभम दोस्त का नाम क्या है? सॉरी, अक्ष. ओके, सो लेट्स से वन ऑफ अ फ्रेंड, वो क्या क्या बोले घर जाके, मम्मा मैं बहुत थक के आ गया आज, टुडे आई विल गो टू माय बेडरूम, लॉक माय बेडरूम एंड नेक्स्ट 5 hours आई विल फुल्ली स्टडी, डोंट डिस्टर्ब मी एट ऑल, आई विल लॉक माय डोर फ्रॉम इनसाइड. ये अंदर चले गया, डोर लॉक कर लिया. अब अंदर क्या कर रहे हैं भगवान जाने, ओनली ही नोस, हिज सेल फोन नोस व्हाट ही इज डूइंग. बट आउटसाइड व्हाट मदर विल थिंक, दैट इज कॉल्ड डीम्ड टू बी स्टडीइंग. वाक्य में पढ़ रहा होगा बट एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल. क्लियर है बेटा? दोस्तों बोलो, ये लाइन क्या है? एवरी पर्सन इज डीम्ड टू बी एन assessee. Example, my dear friends, agent of a non-resident. Agent of what beta? Non-resident. We have got one second chapter called residential status, where we will learn in income tax, we will classify the person as a resident, non-resident. Resident कौन है, non-resident कौन है, उसका bifurcation है, depending upon how many days you stay in India. इंडिया में इतना दिन है तो हम रेजिडेंट बोलेंगे, इंडिया में इससे कम दिन है तो आपको नॉन रेजिडेंट बोलेंगे. आपको रेजिडेंट बोले तो इतना ही टैक्सेबल है, नॉन रेजिडेंट बोले तो इतना ही टैक्सेबल है. वो सब सेकंड चैप्टर में आएगा. क्लियर है ना बेटा? व्हाट इज दैट वर्ड? एजेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट. गेटिंग क्लैरिटी एवरीबॉडी? फ्रेंड्स, एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन assessee. लास्ट वाला एक पॉइंट है बेटा, विद दैट विल क्लोज दिस. दैट इज assessee in default. What is that word, sir? Assessee in default. Assessee in default, in which there are 3 cases. Assessee in default matlab assessee who has made a mistake. Assessee in default. Default means made a mistake. 3 cases are covered here. Case number 1. Person who has not done TDS. कोई सुने क्या ये वर्ड TDS? कभी सुने क्या? कौन कौन सुने ये वर्ड TDS? हाथ उठाओ. फुल फॉर्म क्या है इसका? कोई आइडिया? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. क्या बात है, हाफ द क्लास नोस फुल फॉर्म. टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. आई विल गिव ए क्लासिक एग्जांपल फॉर दिस. सो लेट अस से फॉर एग्जांपल, expert professional academy is supposed to pay me 10 lakh rupees, example. But when they are about to pay me 10 lakhs, they will not pay me 10 lakh. They will deduct 10%, 1 lakh rupees and pay me only 9 lakh. आप सोचेंगे सर हर केस में 10% है क्या? नहीं, अलग अलग केस में अलग अलग TDS रेट है. ये सब पढ़ने वाले हैं क्या सर हम? हाँ. कौन से चैप्टर में सर? एक अलग चैप्टर है नेम्ड एज TDS. आई थिंक आपको 1-2 दिन में समझ में आ रहा है कि हम लोग अगले नेक्स्ट 1.5 मंथ क्या करने वाले. बराबर है ना यार? थोड़ी ना सिर्फ टैक्स रिलेटेड करते बैठेंगे यार, बहुत काम है अपने पास. क्लियर है ना? तो TDS करेंगे. एक्सपर्ट मुझे जब पेमेंट करेंगे TDS करेंगे, मेरे पैसे में टैक्स काट के गवर्नमेंट को पे करेंगे. आप बोलेंगे शिवा सर आपको नुकसान हो गया ना. नुकसान क्यों हुआ मुझे? क्या होगा सुनो. आई विल गिव अ स्मॉल एग्जांपल, सिंपल लैंग्वेज आई विल गिव. सर देयर इज एक्सपर्ट. Expert is supposed to pay me how much? 10 lakhs. How much they are deducting? 1 lakh. How much they are paying to me? 9 lakh. ये 1 लाख को जेब में रखेंगे क्या वो? नहीं, वो 1 लाख को क्या करेंगे? गवर्नमेंट को जमा कर देंगे. Yes or no sir? They'll pay that 1 lakh to the government. Tomorrow, at the end of the year, पूरा साल खत्म होने के बाद शिवा तेजा का पूरा इनकम कैलकुलेट करेंगे. सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेस. याद है ना 5 हेड्स ऑफ इनकम?
salaries, house property, PGBP, capital gains, other sources. Under 5 heads of income, we'll calculate my total income. मेरा टोटल इनकम आ गया ना? अरे यार बेटा बोलो ना यार, मेरा टोटल इनकम फिगर आ गया. वो टोटल इनकम फिगर के ऊपर कुछ भी नहीं हुआ यार, स्लीप मोड पे चले गया. मेरे पे ध्यान दो ना यार, मैं क्या बोल रहा था. हाँ, शिव तेजा का पांचों इनकम कैलकुलेट करेंगे. क्या पांचों इनकम? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेस. सब इनकम कंबाइन करने के बाद मुझे फिगर क्या आ गया? टोटल इनकम. अब ये टोटल इनकम के ऊपर मुझे टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा. मैं निकालूंगा कितना है टोटल टैक्स पेएबल, उसमें से माइनस करूंगा वॉट एवर टीडीएस इज डन. बैलेंस कुछ है वो मैं जेब से गवर्नमेंट को पे करूंगा. आपको भी डाउट आएगा, सर समझो आपका टैक्स भरने का है 80,000, बट आपका टीडीएस है 1 लाख रुपए, तो क्या होगा सर? 20,000 रिफंड आएगा. 20,000 रिफंड आएगा. अगर पूरा साल खत्म होने के बाद मेरा टैक्स लायबिलिटी है 1,20,000, टीडीएस कितना गया? बैलेंस 20,000 फ्रॉम द पॉकेट एल पे. One student is telling, sir, shift the burden. Shift. How can you shift? It is what tax? Direct tax. Impact and incidence on same person. I already told you yesterday only. I never cry to pay GST. But paying income tax is painful because it's going from pocket. It's burning the pockets. समझा क्या भाई TDS क्या होता? बोले ना बेटा, इसमें बहुत कहानी है भाई. टीडीएस किस केस में क्या रेट है, कैसा होगा, क्या होगा, वो सब हम डिटेल में बात करेंगे. 3 दिन पढ़ेंगे टीडीएस. अब वो जो 3 दिन पढ़ने वाले टीडीएस, उसको मैं 2 मिनट में तो खत्म नहीं कर सकता. बट आपको टीडीएस क्या होता समझाने के लिए बोला आपको मैंने. आप मुझे बोलो, जब एक्सपर्ट मुझे बोलता है कि शिवा सर, विनोद सर मुझे बता रहे, शिवा सर आपको 10 लाख रुपए देना है, हम 1 लाख कट करके आपको 9 लाख से देंगे. मैं बोलूंगा विनोद सर ऐसा थोड़ी कर सकते हैं, ये गलत है सर, ये ना इंसाफ है सर. ऐसा बोलूंगा क्या मैं? नहीं. दैट्स लीगल. ही इज सपोज्ड टू डू दैट टीडीएस. Next point, if he is doing TDS, will I cry telling 1 लाख गया? अरे कभी ना कभी तो भरना ही है ना यार. अगर कल के दिन मुझे 1,20,000 भरना है, 1 लाख तो पहले ही कट हो चुका है, बाकी 20,000 जेब से भरूंगा. अगर कल के दिन मेरा टैक्स आया 70,000 रुपए, टीडीएस कितना गया ऑलरेडी? 1 लाख. तो मैं रिफंड क्लेम करूंगा 30,000, गवर्नमेंट देंगे इंटरेस्ट के साथ. अब इंटरेस्ट ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो, 0.5% देंगे. ठीक है, वो इंटरेस्ट क्या है वो भी पढ़ेंगे हम. वी हैव अ चैप्टर कॉल्ड लेवी ऑफ इंटरेस्ट. आई थिंक वी आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न. क्लियर है ना? अब ये पॉइंट का मीनिंग क्या है बोलो, पढ़ो ये लाइन. सक्सेस इन डिफॉल्ट. फर्स्ट पॉइंट क्या है? पर्सन हु हैज नॉट डन टीडीएस. अब मुझे बोलो, एक्सपर्ट जब मुझे 10 लाख रुपीज पे कर रहा है, एक्सपर्ट को कितना परसेंट टीडीएस करना है? 10%. हर केस में 10% ही है क्या? अलग अलग केस में अलग अलग रेट है. किस केस में क्या रेट है हम किधर पढ़ने वाले हैं? टीडीएस चैप्टर विल लर्न. नाउ डोंट अप्लाई ब्रेन ऑन विच केस व्हाट रेट, बट प्रोफेशनल केस इट इज 10% ओनली. ओके. नाउ एक्सपर्ट दे आर सपोज टू डिडक्ट 1 लाख एंड पे मी 9 लाख. उन्होंने क्या किया? पूरा का पूरा 10 लाख मुझे दे दिए. दैट मीन्स दे हैव नॉट डन टीडीएस. ठीक है ना? नाउ हु इज असेसिंग इन डिफॉल्ट? शिवतेजा. यस क्या बेटा? Who is assessing in default? Expert, not शिवतेजा. अरे टीडीएस करने का जिम्मेदारी किसका है यार? मेरा थोड़ी है यार. सर टीडीएस का फुल फॉर्म क्या है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. एट सोर्स ओनली इट इज डिडक्टेड. किसका जिम्मेदारी है? किसने नहीं किया? तो असेसिंग इन डिफॉल्ट कौन है? अरे तो मैं क्यों यार, मेरा क्या संबंध है यार? समझे क्या एवरीवन? पक्का क्लियर? सर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इसके लिए मैं इतना टाइम ले रहा हूं ये डेफिनेशन पे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. एग्जाम में भी आ सकता है, और ये बिना ये समझे हम कुछ भी नहीं कर सकते टैक्स में. इसके लिए इतना टाइम ले रहा हूं मैं इसके ऊपर. क्लियर है ना? व्हेन आई स्पेंड सम टाइम ऑन समथिंग देयर इज अ रीजन फॉर इट. चलो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा मैंने? पर्सन वाज नॉट डन टीडीएस. अब देखो सेकेंड पॉइंट और डेंजर पॉइंट. Person who has done TDS but not paid to government. समझा क्या सेकंड पॉइंट? क्या है इसका मीनिंग? एक्सपर्ट ने मुझे जब 10 लाख पे करना है,
1 लाख डिडक्ट करके मुझे 9 लाख ही पे किया, बट वो बैलेंस 1 लाख किसको पे करना था एक्चुअली? उन्होंने क्या किया? बस देन विल कॉल एसएससी इन डिफॉल्ट. किसको? मुझे. Done. Are we clear with this? First case is what? Person who has not done TDS. Second case, person who has done TDS but not paid to government. The last point with that SSC is over. The last point is person who failed to pay advance tax. The advance tax करके एक concept है. Advance tax is the tax what we are supposed to pay in the previous year only. अलग अलग इंस्टॉलमेंट डेट पे एडवांस टैक्स भरना पड़ता है. वो एडवांस टैक्स भरना मैंडेटरी है. किस केस में मैंडेटरी है? कितना परसेंट है? ऑल दैट वी लर्न इन द चैप्टर कॉल्ड एडवांस टैक्स. क्लियर है बेटा? एवरी वन सर? गुड सर. yesterday I couldn't connect the system, but today it's connecting. थोड़ा सा टेक्निकल इशू था उसमें. This is your income tax website, incometax.gov.in. सब कुछ anything related to income tax happens in this particular website only. You can find here e-pay tax, verify PAN status, instant PAN. दिख रहा है क्या आपको ये सब ऑप्शंस? दोस्तों, एवरीवन, अभी देखो. Here, you can see here, there is something called what, my dear friends? Salaried employee, business or profession. दिख रहा है क्या आपको ये? क्या है यार, क्यों जा रहा है ये सब बार बार? सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन, नॉन रेसिडेंट. लास्ट में क्या दिख रहा है बेटा? HUF, which stands for what? Hindu Undivided Family. Clear, my dear friends? In order to pay the tax or in order to file your income tax return, everything happens only in this website called incometax.gov.in. हर चीज इसमें होता है. क्लियर है बेटा? बट अगर अपने को लॉ देखना है बेटा, there is one website called incometaxindia.gov.in. If I go to the website called incometaxindia.gov.in, this is one website where I can find all the tax rules. ये पे देखो, tax law and rules दिख रहा है क्या? Income Tax Act, is it visible? थोड़ा zoom करो क्या? Income Tax Act दिख रहा है? Income Tax Rules, Income Tax Act बेटा, Income Tax Rules, Circulars, Notification, Finance Act. वो सब पढ़े ना हम लोग? समझे ना वो मीनिंग क्या है उसका? फ्रेंड्स, ये सब चीजें पढ़ने के लिए दिस इज अ प्रॉपर ऑथेंटिक वेबसाइट. बिकॉज इफ यू टाइप समथिंग इन गूगल यू विल फाइंड हंड्रेड्स ऑफ पेजेस. अलग अलग लोग अपने अपने भाषण देंगे, बट द प्रॉब्लम इज वॉट एवर लैंग्वेज दे राइट इन अदर वेबसाइट्स, इट इज ऑल देयर फीलिंग्स एंड इमोशंस. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी शुड नॉट हैव फीलिंग्स एंड इमोशंस. व्हाट वी वांट इज ओनली सेक्शंस एंड सबसेक्शंस. सो प्लीज, नो फीलिंग्स एंड इमोशंस, ओनली sections and subsection. Clear है ना? अब देखो बेटा, when I talk about this income tax act, see, ऐसा खुलता है बेटा. The moment I click that income tax act, I'll find all section numbers like this. मैंने आपको बताया था ना, section 3 कल previous year, section 4 कल बात कर रहे थे हम chargeability. Friends, everyone, अब देखो, when I let's say click section 2, सेक्शन 2 में बहुत सारे डेफिनेशंस आ जाएंगे. और हम अभी क्या डिस्कस कर रहे थे हम? बोलो बेटा. देखो, assessee means a person by whom any tax is payable under this act.
every person in respect of whom proceedings have been taken up for assessment of his income or assessment of income of any other person in respect of which he is assessable. Second point, who is deemed to be an assessee. Third point, who is deemed to be an assessee in default. समझ रहे क्या बेटा? ये सब समझना बहुत ही जरूरी है. क्लियर एवरीवन? तो कभी अपने को इनकम टैक्स का कुछ एक्ट देखना है, सेक्शन देखना है, द बेस्ट वेबसाइट इज द ऑफिशियल वेबसाइट ओनली, नॉट एनी गूगल फीलिंग्स एंड इमोशन. आर वी क्लियर विद दैट? बेटा बोलो ना यार कुछ. पक्का 100% श्योर? चलो बोलो. assessee in default covers how many cases? 3 cases. What are 3 cases? Person who has not done TDS, person who has done TDS but not paid to government. Number 3, person who failed to pay advance tax. These are the 3 points covered in assessee in default. Friends, is every assessee a person? Is every person an assessee? Come on, which section defines assessee? Section 2, clause 7. 2.9. Assessment year. 2.7. assessee. 2.9. 231. Person. आज ही बात करें. I only taught you. Me only. You only. Here only. 231 is person. 234 is previous year. Section 3 also is previous year. Section 4 is chargeability section. I think you understood that 2 दिन में इतना section सीखे तो last day क्या होगा? I'll leave it to your imagination. Last day this board will not be sufficient to write section numbers. ठीक है? दोस्तों, done. That's the story of who is an assessee. Are we clear till here? Everyone, sir? Brilliant. We'll write. After some time we'll write. Don't worry. Chalo, get back case. So what are the 5 heads of income we have got? Income from salary, income from house property, profits and gains from business or profession, income from capital gains, income from other sources. कोई भी income हो, we have to categorize in the proper head of income. अगर गलत head of income में लेके गए तो क्या होगा? टैक्स रेट गलत होगा, उसका कंप्यूटेशन भी अलग है. बराबर है ना बेटा? Everyone, sir? Now listen. 5 heads of income. When I take 5 heads of income, my dear friends, what are 5 heads of income? Bolo. Income from salary, income from house property, profits and gains from business or profession, income from capital gains, income from other source. These all 5 heads of income combined together, all 5 heads of income combined together, we call it as gross total income. क्या बोलते बेटा हम उसको? Come on, my dear friends, what do we call it? Gross total income. Gross total income. What do we call it? Come on. Gross total income. From gross total income, my dear friends, we reduce something called deductions under chapter 6A. Deductions under chapter 6A. क्लास के एग्जाम्पल है बेटा, अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया या मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया या बच्चों का स्कूल फीस पे किया, ये सब केसेस में आपको डिडक्शन मिलेगा. एक्चुअली वो पर्सनल खर्चा है, बट फिर भी इनकम टैक्स इज टेलिंग आई विल गिव यू डिडक्शन सब्जेक्ट टू लिमिट. सब्जेक्ट टू लिमिट. अगर वो बेनिफिट दे रहे तो ऑब्वियसली उसमें लिमिट लगाएंगे. समझ में आ रहा है बेटा? एवरीवन, once we reduce the deductions under chapter 6A, the balance figure what we get is called total income, and the tax what we are supposed to pay is always on total income. Tax is not computed on gross total income, tax is computed on total income. समझे क्या बेटा? Everyone, sir? बेटा बोलो, what are the 5 heads of income? बेटा बोलो. Salaries,
हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेस। 5 हेड्स ऑफ इनकम कंबाइन करें तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? ग्रॉस टोटल इनकम। अब ये ग्रॉस टोटल इनकम में से क्या लेस करेंगे हम? डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। 6 इज नॉट नंबर 6, इट इज रोमन 6। प्लीज ऑब्जर्व करो, नंबर 6 मत लिखो। Deductions under chapter 6A. Once we reduce the deductions under chapter 6A, the balance what we get is called total income. And finally, we'll calculate tax on total income only. Tax is a percentage on total income, not on gross total income. Are we getting clarity? Everyone, sir? Next line you see. Friends, when I talk about this word, deductions. What is that word, sir? Deductions. My dear friends, let me tell you, there are two types of deduction. One is payment-based deduction. Other one is income-based deduction. One is called what, beta? Payment-based deduction. What do you call the other one? Income-based deduction. Payment-based deduction, my dear friends. Example, life insurance premium. लेते ना बेटा हम life insurance? Very important life insurance. जिंदगी के साथ भी, हाँ जिंदगी के बाद भी. Correct. Friends, whatever life insurance premium we pay, we can take deduction under one section called ATC. Deduction under section called ATC. And if you are paying something called medical insurance, सब पता है ना आपको? दोनों अलग अलग है ना? फर्क क्या है लाइफ में मेडिकल में? इन लाइफ इंश्योरेंस मनी विल कम, अरे क्या आफ्टर डेथ यार, इट इज एदर ऑन डेथ और मैच्योरिटी, विच एवर इज अर्लियर, लेटर नहीं, दोनों में से एक ही पहले आएगा, विच एवर इज अर्लियर. बट मेडिकल इंश्योरेंस 1 रुपए में वापस नहीं आएगा. अगर अपने को कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट लेना है उसके लिए यूज करेंगे, ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो पैसे गया. But still we take medical insurance. The reason because, see, simple example sir, since last 5 years I am paying medical insurance. एक बार भी यूज नहीं किया मैंने, touch wood, एक बार भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ा, because I never went to hospital for any treatment. उसको यूज नहीं किया. अब मैं ऐसा सोचता क्या, अरे पिछले 5 साल से पैसे भर रहा हूं यार, एक बार तो भी यूज कर लेता काश. अरे भाई मेडिकल इंश्योरेंस है वो, वी टेक इट ओनली एज ए रिस्क कवर. कल के दिन हॉस्पिटल में गए, 10 लाख का बिल है, कहां से लाएंगे 10 लाख? वो इंश्योरेंस कवर अप करेगा. बराबर है ना बेटा? बट ऐसा कोई आदमी रहता है जो सोचेगा पिछले 5 साल से यूज नहीं कर पाए, एक बार तो भी यूज करना चाहिए. अरे कम से कम गाड़ी का इंश्योरेंस है, तब कोई आदमी सोचता कि छोटा सा स्क्रैच है, उसको बड़ा स्क्रैच बना के उसको इंश्योरेंस क्लेम करेंगे. लोग चलाते ऐसा दिमाग, बट आदमी के साथ कोई करता है यार खुद से. यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? नो एवरीवन? क्या शुभम समझा क्या? नेक्स्ट, देयर वन मोर थिंग कॉल्ड, व्हाट इज द वर्ड सर? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम. If we are paying medical insurance premium, my dear friends, that also we can take deduction under one section called ATD. So ऐसा ATC, ATD, ATG, ऐसा अलग अलग सेक्शन से सिलेक्शन से जहां पे आपको डिडक्शन मिलेगा. For example, let's say for example, Vinod sir, he has earned, let us say 1 crore. Out of 1 crore, let's say 20 lakh rupees he donated to BJP. Student is telling, sir डोनेशन तक तो ठीक है, बीजेपी ठीक नहीं है. चलो, anyways, just for fun, how much he has earned? 1 lakh. How much he donated? 20 lakh. To whom? BJP. Income tax law is telling, if you donate money to political party, उसको इनकम में से माइनस करके बाकी पे टैक्स भरो. मतलब 1 करोड़ में से कितना डोनेट किए? 20 लाख. उसका डिडक्शन मिलेगा. बैलेंस कितना है? वो 80 लाख पे टैक्स भरो. तो वैसे अलग अलग केस में अलग अलग डिडक्शन मिलेगा. किस केस में कितना मिलेगा? वी लर्न इन डिटेल इन द चैप्टर कॉल्ड डिडक्शंस. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव चैप्टर कॉल्ड सैलरीज, वी हैव चैप्टर कॉल्ड हाउस प्रॉपर्टी, वी हैव चैप्टर कॉल्ड PGBP, we have a chapter called capital gains, we have a chapter called other sources, we have a chapter called TDS, we have a chapter called advance tax, we have a chapter called deductions. ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं.
which will take some sweet time. Don't worry, we are there with you. Is that clear? Everyone? Next, one more point. Income based. What based, sir? Income based. Income based का example है बेटा interest on savings bank account. Interest on what, Bekra? Savings bank account. We will get deduction under one section called U by S, means under section. U by S means what, beta? Under section. समझे क्या बेटा? That is not my language. That is what practically used also. IC also uses lot of places. ठीक है ना? Deduction under section. Which section? 80 TTA. 80 TTA. 80 TTA gives deduction for interest on savings bank account. 80 TTA gives deduction for what, beta? Interest on savings bank account, where the deduction is interest or 10,000, whichever is lower. उतना डिडक्शन मिलेगा. मतलब समझो अगर आपको 12,000 का सेविंग्स बैंक का इंटरेस्ट मिला, सर मुझे एक बात बोलो, सिंपल सी बात है सर. I'll ask you one straight question. Listen carefully. Shiva Teja has got a savings bank account. In that savings bank, I got interest. Let's say, for example, the interest what I got is 12,000 rupees. अब ये 12,000 को इनकम दिखाएंगे? बेटा बोलो यार, कौन से रेट ऑफ इनकम में दिखाएंगे? Other sources. In other sources, I will show that income of interest on savings bank account. कितना फिगर है? बोलो कितना फिगर है? 12,000. अब ये 12,000 में इनकम में दिखा के 12,000 इनकम में दिखा के उसके बाद मैं डिडक्शन भी लूंगा. चैप्टर 6A के अंदर 80 TTA के सेक्शन के अंदर कितना लूंगा डिडक्शन? 10,000. Because deduction is interest or 10,000, whichever is lower. That is why it is called what deduction? Income based deduction. जो income based deduction होता ना, पहले इनकम में ऐड करके फिर डिडक्शन लेंगे. जो पेमेंट बेस्ड है ना, उसको इनकम में ऐड नहीं करेंगे, सीधा लेस करेंगे. पेमेंट बेस्ड डिडक्शंस आर डायरेक्टली reduced. But जो income based है, it is first considered as income and then reduction is claimed. समझ में आ गया सबको ये चीज? बेटा बोलो, इफ इट इज पेमेंट बेस्ड डिडक्शन वो क्या करेंगे? उसको सीधा लेस करेंगे. इनकम बेस्ड डिडक्शन को क्या करेंगे बेटा? पहले इनकम लेंगे, उसके बाद डिडक्शन लेंगे. Everybody, did you understand this point? Is this deductions important? Obviously very important, because in ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शंस माइनस करने के बाद ही बैलेंस फिगर पे आप टैक्स पे कर रहे हैं. तो कितना अच्छी बात है यार ये. फ्रेंड्स, गेटिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी? ऑल ऑफ अस, कम ऑन, व्हाट आर द 5 heads of income? Salaries, house property, PGBP, capital gains, other sources. All 5 heads of income combined together, what do we call it? Gross total income. From gross total income, what do we reduce? Deductions under chapter 6A. And once we reduce deductions under chapter 6A, balance, what do we call it? We are going to pay tax on total income. And what are the two types of deduction? Payment based deduction, income based deduction. जो पेमेंट बेस्ड है उसको क्या करेंगे बेटा? डायरेक्टली लेस कर देंगे उसको. जो इनकम बेस्ड है उसको क्या करेंगे? पहले इनकम में दिखाएंगे, उसके बाद डिडक्शन भी लेंगे. अलग अलग केस में अलग अलग लिमिट है, किस केस में क्या लिमिट है हम पढ़ेंगे. वंस द टाइम पास बाय वी विल लर्न. जैसे जैसे आगे जाएंगे विल गेट टू लर्न. डोंट वरी. फ्रेंड्स, आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट हियर? एवरीवन सर? So let's finish writing 3-4 points. Come on. What is the last thing we wrote yesterday? असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर लिखे ना, फिर एक नोट भी लिखे क्या कुछ? फॉर नवंबर 24 एग्जाम, प्रीवियस ईयर इज एग्जैक्टली. सर आप मुझे बोलो एक चीज, सुनो नहीं, छोटी सी बात, एक और नोट लिखते हैं उसके बाद चालू करते हैं. सुनो पहले. सर, व्हेन आई राइट प्रीवियस ईयर 22-23, इसका मतलब क्या है? इनकम एट 22-23. इसका मतलब 1 अप्रैल 22 से लेके
31 मार्च 23 तक है, बराबर है ना दोस्तों? अब एक छोटा सा सवाल है यहां पे, सुनो केयरफुली. सो लेट अस से one person, Mr. X, he started business on 10th November 23. When did he start? 10th November 23. He started the business on 10th November 23. Tell me guys, what will be the previous year? 22-23 है ही नहीं बिजनेस. अरे इनकम कब से कमाना चालू करेगा यार ये? बिजनेस स्टार्ट करने के बाद ही ना. तो 22-23 कहां से आ गया बेटा? क्या बेटा? 23-24. But we are not going to write 23-24. I am going to write as 10th November 23 to 31st March 24. If I write 23-24 directly, when I write 23-24 directly, it means 1st April ना. बट नवंबर को तो बिजनेस चालू हुआ है, बराबर है ना बेटा? तो हम एक और नोट लिखने वाले. वो नोट क्या है सुनो पहले. असेसमेंट ईयर is always 12 months, but previous year need not always be 12 months. If business is started middle of the year, then previous year is not 12 months. Previous year 12 महीने से कम रहेगा, बट असेसमेंटर तो पक्का 12 महीने रहेगा. असेसमेंटर कम रहने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि असेसमेंटर तो प्रीवियस ईयर के बाद आता है ना, वो तो ऑब्वियसली 12 महीने रहेगा. समझेगा बेटा सब लोग? चलो एक और नोट लिखो. कल जो नोट लिखे, शायद 2 नोट लिखे ना, कल एक ही लिखे क्या? वो एक नोट आपके एग्जाम के लिए था. डन. एक और नोट लिखो अभी. नोट, पुट अ स्टार मार्क फॉर दैट, इंपॉर्टेंट. असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर assessment year is always 12 months. Assessment year is always 12 months. But previous year, need not always be 12 months. Assessment year is always 12 months, but previous year need not always be what beta? 12 months. दोस्तों क्लियर है? एवरीवन सर? सर आई थिंक आज ये जो मैं आपको ये पढ़ाया, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल इनकम, इसके बाद आपको समझाऊंगा. कल हमने एक पॉइंट लिखा था, जीएसटी इज पेएबल ऑन टर्नओवर बट इनकम टैक्स इज पेएबल ऑन नेट इनकम. मैं आपको नेट प्रॉफिट नहीं लिखा, मैंने नेट इनकम लिखाया. मैं क्यों लिखा नेट इनकम? नेट इनकम मीन्स टोटल इनकम आफ्टर डिडक्शंस. नेट प्रॉफिट लिखेंगे तो गलत बात हो जाएगा, बिकॉज नेट प्रॉफिट सिर्फ पीजीबीपी में आता है, हर केस में थोड़ी नेट प्रॉफिट रहेगा. इसके लिए मैं आपको क्या लिखा था कल? वर्ड नेट इनकम. Net income is nothing but total income, which means after deductions, under chapter 6A. समझेगा बेटा? Everyone? Next point. Next, you can put the heading as assessee. Assessee, section 27. Assessee, section 27. Clear? Right on. Assessee means Assessee means any person liable to pay tax. Assessee means any person liable to pay tax. Assessee means any person liable to pay tax and includes
and includes, look better, next line, first point, and includes any person in respect of whom, any person in respect of whom proceedings have been taken up, any person in respect of whom proceedings have been taken up for assessment of his income. Proceedings for assessment of his income, or income of any other person, in respect of which he is what beta? Accessible. He is accessible, or loss sustained by him, sustained means suffered, basically. Loss sustained by him or such other person. Loss sustained by him or such other person. Clear, beta? Next, second point. Every person who is deemed to be an assessee. Every person who is deemed to be an assessee. Every person who is deemed to be an assessee. Example, agent of a non-resident. Agent. Third point, assessee in default. Assessee in default. उसके नीचे 3 पॉइंट लिखना है बेटा अपने को. नंबर वन, person who has not done what beta? TDS. Person who has not done TDS. Next, person who has done TDS. Person who has done TDS but not paid to government. Person who has done TDS but not paid to government. Third point, person who failed to pay. Person who failed to pay advance tax. That's it. Chalo beta, let's once revise. Come on. Which section defines assessee? Section 2(7). Assessee means what? Every person who is liable to pay tax, and includes any person in respect of whom proceedings have been taken up for assessment of his income or income of any other person in respect of which
he is accessible or law sustained by him or such other person, or every person who is deemed to be an assessee. Last one, assessee in default. Assessee in default में कितना केस है बेटा? 3 cases है. क्या है बेटा? Person who has not done TDS. Second, person who has done TDS but not paid to government. Third case, person who failed to pay advance tax. That's it. These are the 3 points covered in assessee in default. दोस्तों clear है? अब एक note लिखो नीचे. Note. Every assessee is a person 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 but every person every assessee is a person but every person need not be an assessee. But every person will not be an assessee. दोस्तों clear है? Next definition. Come on, put the heading. Person. Which section beta? 231. Come on, right, look. Person includes क्या लिखेंगे बेटा? इंडिविजुअल HUF firm LLP then company cooperative society local authority next association of persons or body of individuals association of persons or body of individuals association of persons or body of individuals next last point artificial juridical पर्सन को क्या बोलते बेटा शॉर्ट में? AJP, not BJP. AJP. Done. So clear with this everybody? बेटा बोलो. So what is section 27? Assessee. 29. Assessment here. 225A. India. 231. 234. Section 3. Section 4. Exactly. So that is why I told you yesterday that when we learn the concept with section number, it makes a huge difference. So ultimately कुछ तो याद रखने के लिए अपने को कुछ तो सोर्स चाहिए ना यार. अगर सेक्शन नंबर के साथ पढ़ाई कर रहे हो तो अपने को याद रखना बहुत आसान हो जाएगा, वरना कंटेंट पढ़ते जाएंगे तो पागल हो जाएंगे. और CFNL में तो कैसे भी सेक्शन लिखना मैंडेटरी है एग्जाम में, वरना मार्क्स कट कर देंगे फाइनल में. इंटर में सेक्शन नंबर नहीं लिखे तो मार्क्स आएगा, बट समझने के लिए पढ़ने के लिए सेक्शन नंबर जरूरी है बहुत. अगर एग्जाम में आप नंबर नहीं लिखे पूरा कंटेंट लिखे फिर भी मार्क्स आएगा. बट आप इंस्टीट्यूट का बुक चेक करेंगे या तो पास्ट एग्जाम का RTPs MTPs कुछ भी चेक करेंगे, हर आंसर में इंस्टीट्यूट सेक्शन नंबर देता ही है. क्लियर है ना एवरीवन? डन. So that is the story what we understood till now about who is an assessee and who is a person. Clear friends? Come on, next start writing. Come on, next bullet point.
some tax rates some tax rates are given in income tax act. Some tax rates are given in income tax act. Some tax rates are given in what, beta? Income tax act. And some are given in, some tax rates are given in income tax act. Some tax rates are given in income tax act and some are given in finance act. समझेगा बेटा? Some are given where? Income tax act. And some are given where? Exactly. Some tax rates are given in income tax act, some are given in finance act. Next point. Tax is payable. Tax is payable on total income. Next line. Total income means gross total income. Gross total income. Total income means gross total income minus, you can put minus symbol, minus all deductions under chapter 6a. Minus all deductions under what, beta? Chapter 6a. Minus all deductions under chapter 6a. 6 is what? Roman 6. बराबर है ना बेटा? Next point. Gross total income. Gross total income is the sum of, gross total income is the sum of, SUM, total, is the sum of all 5, what बेटा? क्या बोलेंगे उसको? Heads of income. Is the sum of all 5 heads of income. When I combine all 5 heads of income, what I get is called gross total income. दोस्तों clear है? Next point. There are 2 types of deduction. There are 2 types of deductions as under. There are 2 types of deductions as under. ये लेना बेटा, टेबल लेना नहीं. Payment based, income based. Please take this table.
Friends, done? So what are the two types of deductions beta? पेमेंट बेस्ड, इनकम बेस्ड. अगर पेमेंट बेस्ड है तो क्या करेंगे? डायरेक्टली हम डिडक्शन लेस कर देंगे. अगर इनकम बेस्ड है तो पहले तो वो इनकम में जाएगा, उसके बाद विल टेक डिडक्शन. उसका एग्जांपल क्या है? एक इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट. सेविंग्स बैंक अकाउंट तो पता है ना, हम सबके पास तो है ही. डन. चलो बेटा, और व्हाट आर द 5 heads ऑफ इनकम? Salaries, house property, PGBP, capital gains, other sources. All 5 heads of income combined together, what do we call it? Gross total income. Very good. From gross total income, what do we reduce? Deductions under chapter 6A. Clear? Once we reduce chapter 6 reduction, balance what we get is called total income. And we'll calculate tax on. Excellent. दोस्तों clear है? चलो बेटा बोलो, what is section 2(7)? Section 2(7) is what? Assessee. 2(9). Assessment year. 225A. 231. 234. बोलो बेटा. Section 3. Section 4. बराबर है ना दोस्तों? Everyone? चलो बोलो, what is assessee? Assessee means any person liable to pay tax and includes every person in respect of whom proceedings have been taken up for assessment of his income or income of any other person in respect of which he is assessable or loss sustained by him or such other person. Clear है ना? Remember my Chotu example. Done. Second, every person who is deemed to be an assessee. वो तो सिंपल एग्जाम्पल है. नॉन रेजिडेंट का एजेंट, नॉन रेजिडेंट को पकड़ नहीं सकते तो एजेंट को पकड़ेंगे. बराबर है ना? लास्ट पॉइंट, assessee in default. इसका भी एक खतरनाक एग्जाम्पल दिया मैं आपको. 3 केसेस कवर्ड है. एक तो पर्सन हु हैज नॉट डन TDS. सेकंड, पर्सन हु हैज डन TDS बट नॉट पेड टू गवर्नमेंट. थर्ड केस, पर्सन हु फेल टू पे एडवांस टैक्स. क्लियर है? डन. 2(9). Assessment year. 225A. India covers territory, territorial waters, seabed and subsoil underlying such water, continental shelf or exclusive economic zone and airspace above territory and territorial waters. जो फ्रेंड्स आज ही आए नोट्स कंप्लीट करो और शाम में रिवाइज कर लो. ठीक है? समझ में नहीं आया तो आ जाना मेरे पास. डन. 231. पर्सन, इट स्टार्ट्स विद द वर्ड इंक्लूड्स. याद है ना? Done. 234. Previous year. Section 3. Section 4. Chargeability section says what? Income earned in previous year is chargeable to tax in assessment year. Straight answer. Clear, beta? Done. Let's take a break, and after break we'll resume back. Thank you.
चेक कर लो। Yes, get back, my dear friends. Come on. So, friends, we discussed about who is an assessee, who is a person, and we understood very clearly that all five heads of income combined together. What do we call it, beta? Gross total income. उसमें से क्या लेस करेंगे बेटा बोलो? Deductions under chapter 6A. Deduction लेस करने के बाद जो बैलेंस फिगर आएगा उसको क्या बोलेंगे बेटा? टोटल इनकम. अल्टीमेटली हम जो टैक्स कैलकुलेट करेंगे वो किसका कैलकुलेट करेंगे? टोटल इनकम पे ही टैक्स कैलकुलेट करेंगे. इसलिए मैंने आपको कल लिखाया था नेट इनकम. Total income is also called as net income. Friends, clear with that? What are the two types of deduction, beta? Payment based deduction, income based deduction. अगर payment based deduction है तो क्या करेंगे बेटा? डायरेक्टली हम उसको लेस करेंगे. अगर इनकम बेस्ड है तो क्या करेंगे बेटा? पहले उसको इनकम में लेंगे, उसके बाद डिडक्शन लेंगे. दोस्तों क्लियर है? नाउ देयर इज वन इंटरेस्टिंग वर्ड व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स. दैट इज कॉल्ड exemption. There is one word called exemption, another word called deduction. दोनों सेम नहीं है बेटा. Both are not same. Now what is the point you have to understand is that deduction are those which are reduced from कहां से बेटा? Gross total income. Deductions are those which are reduced from gross total income. बराबर है ना बेटा? बोलो. Deductions are those which are reduced from gross total income. Exemptions are those incomes which will not form part of gross total income. सर डिडक्शन जो है वो ग्रॉस टोटल इनकम से लेस करेंगे. एग्जेम्पशन जो है वो ग्रॉस टोटल इनकम में आएगा ही नहीं. इसके लिए क्लासिक एग्जांपल है बेटा एग्रीकल्चरल इनकम विच इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(1). We have got one section called section 10 which talks about exemptions. We have got one section called which section beta? Section 10 which talks about exemption. उसमें 10(1) section बोलता है agricultural income from a land in India is not taxable. ये कल बताया था ना आपको मैं? Agricultural income from a land in India is not taxable. If it is agricultural income from a land outside India, वो taxable होगा. But if it is agricultural income from a land in India, it is not taxable. ये पता है ना बेटा आपने को? दोस्तों, exemption में deduction में फर्क समझ में आया क्या? Because I have seen some cases where people are writing instead of the word deduction, they are writing the word exemption. अरे यार दोनों में इतना फर्क है. How can you write all that यार? Please, please understand this point. See, I have also worked for 2 years with institute as a paper setter, and I worked with institute for 1 year as a paper examiner. Setter मतलब जो पेपर सेट करते, बट हम जो सेट किए वो एज इट इज नहीं आएगा. इंस्टीट्यूट क्या करता है इंडिया में 4 फैकल्टी के साथ 4 लोगों से सेट कराते पेपर. सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी. तो मैंने एक सेट बनाया. वो लोग क्या करते हैं चारों कंबाइन करके उसमें से एक क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन, इसमें से पिकअप करके मिक्स करके पेपर बनाएंगे. बराबर है ना? वरना सिक्योरिटी इश्यूज. मैं जो पेपर बनाऊंगा सेम एग्जाम में आएगा तो फिर हो गया. समझे? एंड आई ऑल्सो वर्क फॉर 1 year विद एज एन एग्जामिनर वेयर आई वाज करेक्टिंग पेपर्स. while correcting papers lot of times BP will go up and down. तो आंसर्स देख के क्या लिखते यार. एक बार एग्जाम में इंडिया का डेफिनेशन आया 225A. स्टूडेंट इज राइटिंग इंडिया कवर्स लैंड वाटर एयर. ठीक है बराबर है लैंड वाटर एयर, बट व्हाट लैंड, व्हाट वाटर, व्हाट एयर? व्हाट इज दिस लैंड वाटर एयर? क्लियर ना? सो आवर लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो एग्जम्पशन इज डिफरेंट, डिडक्शन इज डिफरेंट. डिडक्शन इज व्हाट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम gross total income. Exempted incomes which will not form part of gross total income. दोनों का फर्क समझ में आया ना? सबको क्लियर है ना बेटा? चलो एक पॉइंट लिख देते पहले नीचे. अभी वो लिखे ना आप लोग पेमेंट बेस्ड, इनकम बेस्ड, और नीचे नोट लिखो, बस नोट करके लिखो.
Note, deductions are reduced from gross total income. Deductions are reduced from gross total income, whereas deductions are reduced from gross total income, whereas exemptions are those incomes, exemptions are those incomes which will not form part of gross total income. Exemptions are those income which will not form part of gross total income. Example, agricultural income from a land in India. Agricultural income from a land in India is exempt. देखो, is exempt under section, कौन section बेटा? 10(1). That's it. Chalo. Now comes the real game. Nothing to write. Just listen now. For some time, just relax, listen and focus. Sir, now I told you today, first point I made you write is that there are some tax rates which are given in Income Tax Act and some tax rates are given by Finance Act. Barabar hai na beta? And our at CA inter level, the major focus of tax rates is on individual. पार्टनरशिप फर्म का कंपनी का भी पढ़ाऊंगा मैं, आज नहीं कल पढ़ाऊंगा पार्टनरशिप फर्म का कंपनी का भी, बट वो सब ज्यादा सीए फाइनल में आता है एग्जाम में, बट सीए इंटर लेवल पे ज्यादा इंडिविजुअल का ही क्वेश्चन आता है. यस, पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ेंगे, बट जनरली एग्जाम में वही आता है. सुनो अभी. सर, व्हेन आई टॉक अबाउट इंडिविजुअल्स, किसकी बात करें बेटा? When I talk about individuals, my dear friends, there are two interesting elements. One side, I will write about something called section 115 BAC. What is section number, beta? 115 BAC, which stands for default tax regime. उसको क्या बोलते हैं बेटा? Default tax regime. Default tax regime. वापस बोल रहा हूं बेटा, default tax regime. इस default tax regime में बेटा deduction under chapter 6A is not allowed except few. चैप्टर 6 डिडक्शन हम लेस करेंगे ना ग्रॉस टोटल इनकम में से, सर वो नहीं मिलेगा, एक दो पॉइंट मिलेगा और बाकी कुछ नहीं मिलेगा. फ्रेंड्स, अंडरस्टैंडिंग? सम एग्जम्पशंस आर नॉट अलाउड. ये सब कुछ नहीं मिलेगा. थोड़े एग्जम्पशन नहीं आएंगे, थोड़े डिडक्शन नहीं आएंगे, पर उसको क्या बोलेंगे हम? डिफॉल्ट टैक्स regime. Which section, my dear friends? 115 BAC, which is called default tax regime. In this default tax regime, my dear friends, the tax rates are like this, which says up to 3 lakh rupees, the tax is nil. Tax is nil. 3 lakh to 6 lakh, tax at the rate of 5%. मतलब बेटा सुनो अभी, when I say 3 लाख 6 लाख 5%, अगर किसी बंदे का इनकम 5 लाख रुपए 5 लाख रुपए से
डायरेक्टली वी शुड नॉट टेल 5 लाख इंटू 5%, दैट इज रॉन्ग. अगर किस बंदे का इनकम 5 लाख रुपए है, यू शुड नॉट टेल दैट 5 लाख इंटू 5% इज 25,000, दैट इज टैक्स, विच इज रॉन्ग. दैट इज नॉट हाउ यू हैव टू कैलकुलेट. हाउ यू हैव टू कैलकुलेट अप टू 3 लाख टैक्स इज 0. और कितना है उसका इनकम कितना है? 5 लाख है. 5 लाख में 3 लाख तक तो 0 है, बचा कितना? और वो 2 लाख में कितना? विच इज 10,000. दैट इज कॉल्ड स्लैब रेट्स. क्या बोलेंगे उसको? स्लैब, SLAB, स्लैब, स्लैब रेट्स. अगर 5 लाख इनकम है तो टैक्स कितना है? 10,000. दोस्तों अगर 6 लाख इनकम है तो कितना होगा टैक्स? 3 लाख तक तो टैक्स कुछ भी नहीं है. 3 से 6 लाख तक कितना है? 5% है. मतलब 3 लाख पे 5% है तो कितना होगा? 15,000. सर, एवरीवन, ऑल ऑफ अस, अगर इनकम 4 लाख रुपए है तो टैक्स कितना होगा? अगर इनकम 4 लाख रुपए तो टैक्स कितना होगा? फर्स्ट 3 लाख टैक्स 0 और 1 लाख के ऊपर 5%, 5,000. फ्रेंड्स, वर्किंग समझ में आ रहा है क्या? अगर 5 लाख इनकम में डायरेक्ट आप 5% नहीं बोल सकते, दैट्स अ रॉन्ग वर्किंग. यू शुड गो ऑन स्लैब बेसिस. क्लियर? कम ऑन, अप टू 3 lakhs. Nil. 3 lakh to 6 lakhs, 5%. 6 lakh to 9 lakh, 10%. 9 lakh to 12 lakh, 15%. 12 lakh to 15 lakh, 20%. आप ऑब्जर्व कर रहे तो हर 3-3 लाख को 5-5% बढ़ रहा है. याद रखना, कुछ बड़ी बात नहीं है. समझे ना बेटा? सबके पास कैलकुलेटर है क्या? निकालो कैलकुलेटर एक बार. चलो सोच समझ के मुझे जवाब देना बेटा. करेंगे ना? कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट कैलकुलेटर पे टक करके बोल दो मुझे. अगर इनकम 8,20,000 है तो टैक्स कितना आएगा? बोल. इनकम 8,20,000 है, निकाल बेटा टैक्स. कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस कैलकुलेट करके बोलना. 22,000 श्योर? कैसा है 22,000? 3 लाख तक तो 0 है. 3 से 6 लाख 5%, मतलब 3 लाख का 5% कितना हुआ? 15,000. सर 3 लाख 5% इज हाउ मच? 15,000. नेक्स्ट स्लैब क्या है? 6 लाख टू 9 लाख इज 10%. बट अपने को 6 लाख से कहां तक देखना है? 8,20,000, विच इज नथिंग बट 2,20,000. 2,20,000 का कितना हुआ? 22 प्लस 15, 37. आप लोग क्या बोले थे? सब वर्किंग समझ में आ रहा है क्या? वापस बोलूंगा, वापस सुनो 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 सुनो, वापस बोलूंगा. कोई नहीं कोई नहीं, 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं आज सॉल्व करेंगे अपन. नेक्स्ट हाफ एन आवर में मैं आपको समझा दूंगा ये सब कुछ, फिर हम 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आज. ठीक है? सुनो, 8,20,000 है ना बेटा, ध्यान से सुनो. कैसे करना है अपने को? 3 लाख तक टैक्स कितना है? 0. 3 लाख से 6 लाख तक टैक्स कितना है? 5%. कितना हुआ ये? 15,000. बेटा बोलो ना यार. हाँ, 6 लाख से लेके कहां तक देखेंगे अपन नॉर्मली? 9 lakhs. बट 9 लाख इनकम है क्या अपने पास? तो आई विल सी ओनली अप टू 8.2 लाख. इसका कितना? 10%. कितना हुआ? 22,000. 22 प्लस 15, दैट्स इट. फ्रेंड्स, आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? बोलो. एक और क्वेश्चन पूछो. 11 lakhs निकालो. हाँ नहीं, गलत है वो. उतना बड़ा फिगर आ ही नहीं सकता. 75 है क्या? ठीक, देखते हैं. 75. कितना बोला मैंने? 11 lakhs. सर लिख के दिखाओ या समझा दूं? समझा तो हो जाएगा ना? लिखने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अपने को आदत नहीं होना चाहिए वो. दैट्स वाई 3 लाख तक 0. 3 से 6 lakhs 5%.
कितना हुआ वो? 15,000। 6 से 9 लाख 10%, कितना हुआ वो? 30,000। करेक्ट है ना? 9 लाख तक हो गया। नेक्स्ट स्लैब क्या है? 9 to 12, बट मैंने कितना बोला? 11। तो 9 to 11 कितना रेट? 2 लाख इंटू 15%, कितना हुआ फिर? 30,000। ऊपर 30 आया, उसके ऊपर 15 आया, 15 प्लस 30 प्लस 30, 75,000। समझा क्या? समझ में आ रहा है क्या? दिमाग में जा रहा है क्या? 2 लाख कैसा है मेरा दोस्त? कैसा आ सकता है 2 लाख? हाँ ठीक है। अच्छा, मेमोरी एम प्लस एम आर सी, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो सबको क्लियर है क्या ये चीज? समझ में आ रहा है कि स्लैब रेट्स? टेक्निकली दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड progressive system of taxation. Higher the income, higher the tax. Lower the income, lower the tax. ठीक है ना बेटा? समझ में आ रहा है क्या? अगर किसी बंदे का सैलरी है महीने को 15,000, मंथली 15,000, हाउ मच पर एनम? 1,80,000. Should he pay any tax? Answer is 0. No tax at all. Are we understanding why and how? बेटा बोलो ना बेटा प्लीज। चलो अप टू 3 लाख, नेल 3 लाख टू 6 लाख, 5%, 6 to 9, 9 to 12, 12 to 15। इतना एफर्ट लेके, अरे बाप रे याद रखना पड़ेगा, इतना टेंशन की जरूरत ही नहीं है यार। हर 3 लाख को 5% बढ़ रहा है यार, बराबर है ना? 15 लाख हो गया ना? नेक्स्ट नेक्स्ट क्या लगता है आपको? 15 से 18, वंडरफुल, बट व्हाट दे टोल्ड इज स्ट्रेट अवे above 15 lakhs। 15 से 18 कुछ नहीं है, सीधा above 15 lakhs at the rate of 30%। 25% कुछ नहीं है, सीधा 30%। समझे क्या? अब एक क्वेश्चन पूछो आपसे, सोच समझ के करना आंसर। 18,80,000, क्या बेटा करो ना। टू 64, सबका भी आंसर है क्या? एवरीबडी सेम आंसर? क्या है बेटा दिखाओ, आएगा 264 पक्का? 3,80,000 का 30% कितना है? 1 लाख नहीं, 3,80,000 का 30% कितना है? 1,14,000, 114। हाँ, आपका आंसर क्या है बोले? 2,64,000, परफेक्ट आंसर। ठीक है ना बेटा यार? अरे 15 लाख तक 1.5 लाख आता है यार टैक्स। 15 लाख तक टैक्स 1.5 लाख जाएगा बेटा। 1.5 लाख कैसा है सर? अरे 3 लाख तक जीरो है, 3 से 6 5% है, तो विदाउट 15,000, 6 to 9 is 5, 6 to 9 is 10%, which is 30,000, 9 to 12 is 15%, that is 45,000, 15 plus 30 plus 45, अभी तक 90 हो गया, अभी तक 90 हो गया। 12 15 3 लाख का 20% कितना है? 60, 90 प्लस 60 150, तो 15 लाख तक तो 150 आना ही है, उसके ऊपर जितना एक्स्ट्रा होगा उसका 30%। ये प्रैक्टिस में आ जाएगा अपने आप। जब आप 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप एक एक कैलकुलेट करते नहीं बैठेंगे, आपको अचानक आता है 15 लाख तक तो 1.5 लाख है ना यार, बाकी देखेंगे अपन। समझ रहे क्या आप मेरी बात? फ्रेंड्स, एवरीबॉडी, ऑल ऑफ अस, पक्का क्लियर? अब मेरा एक क्वेश्चन है, थिंक प्रॉपर्ली एंड टेल मी, ओके? शिव तेजा, आई हैव गॉट 10 लाख रुपीज फ्रॉम एक्सपर्ट। एक्सपर्ट ने 1 लाख कट करके मुझे 9 लाख रुपीज दिया है, बट मेरा इनकम तो 10 लाख ही है ना। समझो मेरे पास कुछ और इनकम है ही नहीं, पूरे साल में सिर्फ मेरा इनकम कितना है? 10 लाख। 10 लाख पर टैक्स कितना है निकालो।
That's it. The answer is 60,000. So my tax is 60,000. बोलो बेटा, madam, how much is my tax? 60,000. How much expert deducted? What will I do then? 40,000 I claim it as refund. हाँ विथ इंटरेस्ट. वेरी गुड. इंटरेस्ट पे ध्यान बहुत है. डन. बढ़िया. तो सबको समझ में आ रहा है क्या ये टैक्स रेट्स क्या है? समझा क्या सब लोगों को? दिस इज विच सेक्शन माय डियर फ्रेंड्स? वो भूल गए. 115 BAC, which we call it as what regime, my dear friends? Default tax regime. And deductions is not allowed except a few. Some exemptions are not allowed. That means थोड़े exemptions नहीं आएंगे, थोड़े deductions नहीं आएंगे. ये default में. स्टूडेंट बोल रहा है सर अगर मुझे पूरा deductions चाहिए, अगर मुझे पूरा exemptions चाहिए, तो मैं क्या करूं? For that law told, you can do something. You can shift out of default tax regime. You can shift out of what beta? Default tax regime. You can shift out of default tax regime. Default मतलब normally वही है, बट अगर आप बोलते हैं कि मेरे को ये पसंद नहीं है, मुझे वो करना है, निकल जाओ, कोई बात नहीं. Law is telling if you don't like default tax regime, you can shift out of default tax regime. So getting clarity? Everybody, sir, you can shift out of default tax regime, which is called optional tax regime. समझे क्या बेटा? अब है तो डिफॉल्ट में ही, पर अगर आप बोलते हैं कि भाई मेरे पास डिडक्शन है, मेरे पास एग्जाम्पशन है, मेरे को डिफॉल्ट में एग्जाम्पशंस भी नहीं आ रहे, थोड़े डिडक्शंस भी नहीं आ रहे, लॉ इज टेलिंग नो प्रॉब्लम. If you want to shift out of default, you shift out of default and go to optional. Go to optional. अब क्वेश्चन ये है कि ऑप्शनल में टैक्स रेट्स क्या है? वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना. आपको क्या लगता है ऑप्शनल में टैक्स रेट कम रहेंगे ज्यादा रहेंगे इससे कंपेयर करें तो? सर अभी जो हमने पढ़ाई किया 3 लाख तक नील है, 3 से 6 5% है, 6 से 9 10% है, उसके बाद 15, उसके बाद 20, उसके बाद 30. These are the tax rates in what? Default tax regime. Now you logically apply common sense. Common sense should be common. Apply common sense and tell me in optional tax regime आपको क्या लगता है टैक्स रेट्स इससे ज्यादा रहेंगे या कम रहेंगे? बोलो बेटा. 100% ज्यादा ही रहेंगे. Because in optional tax regime all deductions and exemptions are allowed. डिडक्शन एग्जेम्पशन जब आएगा उसका इनकम कम हो जाएगा ना यार. फ्रेंड्स सुनो अभी. What are the tax rates? The tax rates when it comes to optional tax regime. Which tax regime बेटा? Optional tax regime. दोस्तों सुनो बेटा, अभी ध्यान से सुनो. In the optional tax regime, my dear friends, let me tell you, there are 3 categories. There are what categories, sir? Default में 3 कैटेगरी है क्या? नहीं, सिर्फ किसमें 3 कैटेगरी है? Optional. If you want to shift out of default, you can shift. Is it mandatory to shift? It's optional. नहीं बोले से तो ऑप्शनल. शिफ्ट करना है तो शिफ्ट करो. अगर आपको लगता है इसमें टैक्स कम है, इसमें शिफ्ट करो. अगर आपको लगता है उसमें टैक्स अच्छा है तो उसमें रहो. आप मेरे से पूछ रहे सर डिफॉल्ट अच्छा है ऑप्शनल अच्छा है? आई विल नॉट गिव यू स्ट्रेट आंसर. लास्ट डे ऑल्सो आई विल नॉट गिव यू स्ट्रेट आंसर. माई आंसर विल बी कॉमन आंसर विच आई विल टेल ऑलवेज इट डिपेंड्स. इट डिपेंड्स मतलब क्या? अगर वो बंदे के पास डिडक्शंस है तो भाई वो छोड़, डिफॉल्ट ऑप्शनल में जा. अगर तेरे को डिडक्शंस है ही नहीं तो ऑप्शनल में जाके क्या करेगा भाई? उल्टा टैक्स ज्यादा आएगा. डिफॉल्ट में ही बैठ. फ्रेंड्स गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? एवरीबॉडी विल डिस्कस सम वंडरफुल एग्जांपल्स. वंस आई टेल द टैक्स रेट्स आई विल गिव एग्जांपल्स. क्लियर है? चलो टैक्स रेट्स 3 कैटेगरीज माय डियर फ्रेंड्स. फर्स्ट कैटेगरी इज नॉर्मल. सेकेंड कैटेगरी इज सीनियर. First category is what? Normal. Second category is senior. Third category is called super senior. Tell me ऐसे 3 कैटेगरी था क्या डिफॉल्ट में? डिफॉल्ट में कोई भी हो टैक्स रेट सेम है, बट इन ऑप्शनल
The tax rate is based on three categories of persons: normal, senior, super senior. Normal, the age limit is 0 to 59. Senior age limit is 60 to 79. एग्जैक्ट 60 कहां पे जाएगा? सीनियर 60 इयर्स एनी टाइम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर में उसका 60th बर्थडे हुआ तो सीनियर में आ जाएगा वो। अपन सब किधर जाएंगे? थैंक यू सो मच सर, क्लियर है ना? नॉर्मल 0 to 59, सीनियर 60 to 79, सुपर सीनियर 80 एंड अबव, जब तक है जान। सर क्लियर ना एवरीवन? एग्जैक्ट 60, एग्जैक्ट 80. Will it make a difference between 60 and 80 when it comes to default tax regime? No. डिफॉल्ट में क्या फर्क पड़ेगा यार? कुछ भी एज हो डिफॉल्ट में तो एक ही कैटेगरी है, बराबर है ना बेटा? चलो टैक्स रेट्स क्या है यहाँ पे ऑप्शनल में, सुनो भाई, अब आएगा मजा। अप टू 2.5 lakhs, सुबह कोई बोल रहे थे 2.5 lakhs, up to 2.5 lakhs, what is the story sir? Nil. 2.5 lakhs to 5 lakh at the rate of 5%. 5 lakh to 10 lakh at the rate of 20%. %10 नहीं है, समझे क्या? नेक्स्ट, अबाउट 10 lakhs स्ट्रेट 30%. उधर 30% कब आया था बेटा? 15 lakhs के ऊपर आया था। इधर कब आया? 10 लाख के ऊपर ही 30% है सीधा। स्टूडेंट इज टेलिंग सर वही अच्छा है ना, फिर अगर आपके पास डिडक्शन ज्यादा है तो ये अच्छा बनेगा ना। स्टूडेंट इज टेलिंग सर के एग्जाम्पल दो ना, दोनों बता के करेंगे वो। ये लिखने के बाद नेक्स्ट वही करने वाले। एक लिखने के बाद क्या करेंगे हम, एक एग्जाम्पल लेंगे, डिडक्शंस का फिगर बताऊंगा, तो फिर हम क्या करेंगे, डिफॉल्ट में भी टैक्स निकालेंगे, ऑप्शनल में भी टैक्स निकालेंगे, जो अच्छा है हम वो लेंगे। स्टूडेंट इज आस्किंग एग्जाम में क्या करने का सर? एग्जाम अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो अपने को डिफॉल्ट करने हैं। क्वेश्चन बताएगा ही शिफ्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट, तो अपने को ये करना है। अगर क्वेश्चन बोलता है दोनों भी कैलकुलेट करो तो दोनों करेंगे। अगेन स्टूडेंट इज आस्किंग तो दोनों में से टैक्स किस में कमाएगा? डिपेंड्स। उसका आंसर कैसा बोल सकते हैं सर? अगर आप मेरे से पूछ रहे, अगर मेरा क्लाइंट भी मेरे को फोन करके पूछ रहा है सर डिफॉल्ट अच्छा ऑप्शनल अच्छा है, मैं उसको दोबारा एक और क्वेश्चन पूछता, आपका डिडक्शंस क्या क्या है बोलो, लाइफ इंश्योरेंस कितना है बोलो, मेडिकल इंश्योरेंस कितना है बोलो, और क्या डिडक्शन है बोलो, फिर हम बात करेंगे। बराबर है ना यार? ऐसे थोड़ी सीधा बोलेंगे ये अच्छा है या वो अच्छा नहीं है। फ्रेंड्स अल्टीमेटली जिसमें टैक्स कम है वो अच्छा है। फ्रेंड्स क्लियर? कम ऑन, नॉर्मल कैटेगरी व्हाट आर द टैक्स रेट्स? अप टू 2.5 lakhs nil, 2.5 lakh to 5 lakh 5%, 5 to 10 20%, about 10. Excellent. Senior category now comes senior. क्या लगता है बेटा आपको? Up to 3 lakhs nil, 3 lakhs nil, 3 lakh to 5 lakh 5%, 5 lakh to 10 lakh 20%, about 10 lakh 30%. अच्छी बात यह है कि दोनों भी सेम है, छोटा सा फर्क है, स्टार्टिंग में वो 2.5 लाख है, ये स्टार्टिंग में 3 लाख है, बाकी सब कुछ सेम। समझे क्या? अच्छा ना यार, सेम है, दूसरा है तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे अपन भी। फ्रेंड्स सिंपल है ना? 2.5 lakhs nil, 2.5 to 5 lakh 5%, 5 to 10 20%, about 10 30%। तीन ही तो कैटेगरी है इसमें। नेक्स्ट सुपर सीनियर, क्या लगता है आपको कितना देना चाहिए इसको? बेचारे 80 एंड अबव है, अप टू क्या दिल वाले यार। नेक्स्ट 5 लाख टू 10 lakhs कितना लेंगे यार? 5% बस। लॉ इज टेलिंग 20%, अबाउट 10 lakh 30%। अरे सब कुछ सेम है यार, इधर 2.5 लाख तक जीरो है, इधर 3 लाख तक जीरो है, उधर 5 लाख तक जीरो है, बाकी तो सेम है। 5 से 10 20%, अबाउट 10 30%। स्टूडेंट टेलिंग अरे सर ये अलग अलग ऐसा क्यों है सर? इससे अच्छा वो सीधा बोल देते टैक्स 10% पे करो, खत्म करो, ये सब टाइम पास क्यों कर रहे हैं इनकम टैक्स वाले?
अगर इतना सब कुछ नहीं है टैक्स में तो हम सीए बन के क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या था वो? सीए बन के क्या करेंगे? क्या झूठ बोलेंगे यार? सी लास्ट बैच वन स्टूडेंट वाज देयर, दैट स्टूडेंट आस्क्ड मी वन क्वेश्चन, सर इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है सर, अलग अलग चीजों का अलग अलग टैक्स रेट, इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं सर? वो सीधा बोल सकते हैं ना, हर इनकम पे 10% टैक्स पे करो, खत्म करो। अरे इतना ही सिंपल है, देन व्हाई विल ए क्लाइंट कम टू यू एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट? लॉजिक इज सिंपल, नो? द मोर कॉम्प्लिकेटेड इट इज, द मोर वंडरफुल फॉर अस, द मोर टेंशन इट इज, द मोर मनी फॉर अस। लॉजिक सिंपल है ना यार, अगर वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है, तो क्लाइंट अपने पास क्यों आएगा यार? वो खुद ही कर लेगा ना। अगर इनकम टैक्स बोलता है कि हर इनकम पे 10% टैक्स पे करो, वो आपके पास क्यों आएगा? वो खुद ही कैलकुलेटर में कर लेगा ना, 200 रुपए में, 100 रुपए में भी आता है कैलकुलेटर, ठीक है, फोन में भी आता है, पता है, नेक्स्ट वीडियो लगाएगा। सीए के पास आके सीए को पैसे देके काम कराने की जरूरत क्या है? बराबर है ना, समझे ना आप मेरी बात? सो प्लीज डोंट हैव दैट माइंडसेट, इट शुड हैव बीन सिंपल, इट शुड हैव बीन सिंपल। स्टूडेंट जैसा लगता है, बट जितना कॉम्प्लिकेटेड है अपने लिए उतना अच्छा है। फ्रेंड्स, दोस्तों, सबको समझ आ रहा है क्या बेटा? बोलना यार। पावर ऑफ टैक्सेशन मैन, इफ एवरीबडी लर्न्स, इफ एवरीबडी नोज दिस, इफ ऑल नॉर्मल पीपल नो दिस, व्हाट विल सीए डू? सीए का रिस्पेक्ट है ज्यादा टैक्स में, द रीजन बिकॉज टैक्स में सबको फटती है भाई, क्योंकि पैसे जा रहे हैं ना। मैं ये नहीं बोल रहा कि टैक्स में फटती मतलब लोगों को होता है डर है क्योंकि पैसे जा रहा है। सर अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ करे, एडजस्टमेंट कुछ करके अपन बैलेंस शीट टैली कर लिए, वो छोटा छोटा करेक्शन जो है वो कंप्लायंस में चले जाता है, बट टैक्स में ऐसा होता नहीं है। टैक्स में छोटा भी गलती करे उसमें पेनाल्टी है, फाइन है, सब कुछ है। टैक्स इन्वॉल्व्स मनी, पैसे जा रहा है, तो इसमें ऐसा नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं कर सकते अपन ऐसे। समझ में आ रहा है क्या बेटा? सो द मोर कॉम्प्लिकेटेड इट इज, द मोर वंडरफुल एंड मोर मनी इट इज। क्लियर है? सो डोंट हैव ए थॉट कि इतना अलग अलग टैक्स रेट्स क्यों है, इसको सिंपलीफाई करना चाहिए। अगर ये सिंपलीफाई करेंगे तो अपन सीए बन के क्या करेंगे? आई थिंक यू गॉट योर आंसर। इफ योर ब्रेन इज बाई चांस थिंकिंग वाई इट इज डिफरेंट, द मोर डिफरेंट इट इज, द मोर वेरी गुड फॉर अस। क्लियर है क्या? बोलो ना बेटा, एवरीवन। गुड। चलो, व्हाट आर द टू टाइप्स? वन इज default. Which section? 115 BAC. What is the other one? Optional. ऑप्शनल का सेक्शन नंबर क्या है? अच्छा, पढ़ा नहीं है सेक्शन नंबर आपको, तो फिर आप पूछ रहे नहीं। गेस करो। 116। वंडरफुल। ऑप्शनल टैक्स रेजिम का कोई सेक्शन नंबर है ही नहीं। द रेट्स आर गिवन बाय फाइनेंस एक्ट। इसके लिए मैंने सेक्शन नंबर नहीं बोला आपको मैंने। समझे क्या बेटा? फाइनेंस एक्ट में सेक्शन नंबर नहीं होता है बेटा। आर वी क्लियर विद दिस पॉइंट एवरीबॉडी? ऑल ऑफ अस। चलो अब एक मस्त एग्जांपल लेके हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे। सुनो बेटा, let us say for example there is one person, Mr. X, his turnover is 30 lakhs, profit is 8 lakhs. Okay, let's say profit is 10 lakhs and he has got deduction under chapter 6A, let us say 2 lakh. Chapter 6, how much beta? 2 lakh, which will come only in optional. बराबर है ना बेटा? दोस्तों, मिस्टर एक्स का एज है 25 years. When I say 25 years, which category बेटा? बोलो बेटा। नॉर्मल। अभी मुझे बोलो पहले, आई वॉन्ट कैलकुलेट टैक्स एज पर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। डिफॉल्ट का सेक्शन नंबर क्या है बेटा? 115 BAC। डिफॉल्ट का सेक्शन नंबर है बेटा 115 BAC। बोलो बेटा, टैक्स विल कम ऑन विच फिगर? विल कैलकुलेट टैक्स ऑन 10 lakhs। समझ रहे क्या आप मेरी बात? अदर साइड
ऑप्शनल टैक्स रिजीम, जिसका कोई सेक्शन नंबर नहीं है, बराबर है। ऑप्शनल टैक्स रिजीम मैंडेटरी है क्या? नेम ओनली सेज ऑप्शनल, नाम में ही ऑप्शनल, फिर मैंडेटरी का सवाल किधर से आया? नेक्स्ट, इन ऑप्शनल विल कैलकुलेट टैक्स ऑन 8 लाख। समझ रहे क्या बेटा? डिफॉल्ट में टैक्स आएगा 10 लाख पे, ऑप्शनल में टैक्स आएगा 8 लाख पे, बिकॉज डिफॉल्ट में डिडक्शन नहीं आया, पर ऑप्शनल में डिडक्शन आया। समझेगा बेटा? चलो निकालते हैं टैक्स अभी, बोलो कम ऑन, लेट्स कैलकुलेट द टैक्स। कम ऑन, 10 lakhs नो, अप टू 3 lakhs nil, 3 lakh to 6 lakh 5%, कितना बेटा? 15,000। 6 lakh to 9 lakh 10%, कितना बेटा? 30,000, बराबर है ना बेटा? नेक्स्ट 9 lakh to 10 lakhs 15%। समझेगा मेरा लैंग्वेज? 9 to 12 लेना है मुझे, बट हे 10 lakhs तो 10 ही लूंगा ना यार। कितना है टोटल? कितना हुआ? यस, स्टूडेंट सेलिंग। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। रुको रुको जरा, वो भी निकालेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कौन सा अच्छा है। दोस्तों समझे क्या वर्किंग? सबको क्लैरिटी आ रहा है क्या? इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आप सॉल्व करेंगे क्या? हाँ गुड। चलो इधर टैक्स ऑन व्हाट फिगर सर? 8 लाख रुपीस निकालो, अप टू, याद नहीं है क्या? देखना है क्या एक बार? देख लिए? देख लिए? चालू करूं बेटा? बोलो, चालू करेंगे अभी, बोलो। अप टू 2.5 lakhs nil, 2.5 lakhs nil. Next, 2.5 lakhs to 5 lakh 5%, which comes to 12,500, बराबर है ना बेटा? नेक्स्ट 5 lakh to 8 lakhs at the rate of 20%, 60,000 टोटल हो गया। Which one is better? Which one is better? Without any second thought, what is better is default. समझ में आ रहा है क्या बेटा? Everyone, sir? All of us getting clarity on this working? Speak out. चलो ये एग्जाम्पल को थोड़ा और आगे लेके जाएंगे। Assume that in above case, total deduction is 3 lakh। अब कितने लिए थे पहले? 2 लाख। वो 2 लाख को मैं कितना किया? 3 लाख। 2 लाख अगर 3 लाख बन गया तो क्या होगा? समझ रहे क्या मेरा केस? 3 लाख बन गया तो क्या होगा? डिफॉल्ट सेम ही रहेगा 60,000, उसमें तो कुछ चेंज होने वाला नहीं है, उससे डिडक्शन से कोई संबंध ही नहीं है यार उसका। अब मुझे बोलो ऑप्शनल में क्या होगा? ऑप्शनल में वील कैलकुलेट टैक्स ऑन 7 lakhs, बराबर है ना बेटा? 7 लाख पे तो क्या होगा? अप टू 2.5 lakhs nil, 2.5 lakh to 5 lakh at the rate of 5%, which comes to 12,500. 5 lakh to 7 lakh 20%, which is 40,000. Total is 52,500. अब मुझे बोलो कौन सा अच्छा है? ऑप्शन अच्छा है। तो कोई स्टैंडर्ड आंसर बोल सकते हैं क्या? डिफॉल्ट अच्छा, ऑप्शनल अच्छा है, उनमें से कौन सा अच्छा है? नहीं बोल सकते ऐसा। वो डिपेंड करेगा डिडक्शन कितना है। वो डिडक्शन लेने के बाद हम कैलकुलेट करेंगे डिफॉल्ट में कितना टैक्स आ रहा है, ऑप्शन में कितना टैक्स आ रहा है, फिर कंपेयर करेंगे कौन सा अच्छा है। अगर क्वेश्चन में कुछ बोला ही नहीं, क्वेश्चन ने बोला टैक्स कैलकुलेट करो, फिर हम डिफॉल्ट में निकालेंगे। अगर क्वेश्चन में बोला डिफॉल्ट से बाहर आ गया, वो ऑप्शन में निकालो। क्वेश्चन बोला दोनों निकाल रहे, निकालो दोनों। फिर अब स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर कौन से डिडक्शन से जो नहीं आएगा वो सब बाद में पढ़ेंगे, कौन से डिडक्शन से वो आएगा तो बाद में पढ़ेंगे। अरे उसके लिए टाइम आएगा ना यार, अभी कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग बोलने के लिए। मैं फर्स्ट डे को लास्ट डे का पढ़ा सकता हूं, बट यू विल गेट कंफ्यूज्ड।
So there is a right time for right thing to be learned. So we'll learn. ठीक है, बट ये सबको समझ में आया क्या आपको? पक्का क्लियर है क्या? Again I'm asking you friends, come on, tell me the answer. Is default good or optional good? Depends. What is section number for optional? No section number. It is given by Finance Act. Section number for default 115 BAC. What are the three categories of age in default? No category. क्या नॉर्मल, सीनियर, सुपर सीनियर? मैंने डिफॉल्ट बोला ना यार. स्टूडेंट इज टेलिंग, सर आपको जो पूछना है आप पूछो, पर हमको जो बोलना है हम वही बोलेंगे. अरे यार, कम ऑन. सीनियर सिटीजन, व्हाट इज द एज? 80. डाउन 80. क्या है यार? 60 to 79. सुपर सीनियर 80 to एबो कितना? हाँ, जब तक है जान, ठीक है. एग्जैक्ट 80, एग्जैक्ट 70, इतना क्या सोच रहे हैं? सीनियर. एग्जैक्ट 50, 55, 58, 52, 62, 61, एग्जैक्ट 60, एग्जैक्ट 60. भाई एग्जैक्ट 60 सर. हाँ, वेरी गुड. 74, 78, 79, 81, एग्जैक्ट 80. सुपर सीनियर का स्लैब रेट्स क्या है? अरे 80 एंड अबो ये भाई स्लैब रेट्स क्या है? अप टू 5 lakhs nil, 5 lakh to 10 lakh 20%, above 10 lakh 30%. करेक्ट ना? बोलो ना यार. चलो, डिफॉल्ट में सुपर सीनियर का एज क्या है? ठीक है. सीनियर का एज क्या है? नॉर्मल का एज क्या है? अगर एज 120 है तो चलेगा, मतलब वो चलेगा, मतलब चलेगा, बट लिमिट तो सेम ही है. एज 20 है तो सेम. डिफॉल्ट में एक ही कैटेगरी है यार. डिफॉल्ट में एज से कोई लेना देना नहीं है. वॉट एवर इज योर एज, योर टैक्स रेट इज सेम. बट वॉट एवर इज योर इनकम, योर टैक्स इज सेम, ऐसा कभी नहीं बोलते. बिकॉज डायरेक्ट टैक्स इज वॉट इन नेचर? जितना ज्यादा इनकम, जितना कम इनकम. वन स्टूडेंट इज टेलिंग, सर इससे अच्छा तो इनकम कमाना ही नहीं, टैक्स भरने का टेंशन खत्म. अरे ऐसे थोड़ी होता है यार. विल समबडी टेल आई विल नॉट अर्न इनकम बिकॉज आई हैव टू पे इनकम टैक्स? समझे क्या आप मेरी बात? See, you cannot afford to tell I will not earn income because I don't want to pay income tax. If that is the case, you got 1 crore rupees, 1 crore पूरा बीजेपी को डोनेट करो, पूरा का पूरा टैक्स जीरो है. Not necessarily बीजेपी, any political party, including शिवसेना पार्टी. वो किसका है मुझे नहीं पता, अब मेरे से मत पूछो. ठीक है, डन. स्मार्ट लोग हैं यार यहाँ पे. गुड. सो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम विद सेक्शन 115. ऑप्शनल विद सेक्शन फाइनेंस, उसका कोई सेक्शन नंबर नहीं है. एंड द कैटेगरीज ऑफ एज आर इन विच केस? ऑप्शनल. सो डिफॉल्ट में कौन से केस में पूरा एग्जम्पशंस आएंगे? ऑप्शनल. कौन से केस में पूरा डिडक्शंस आएंगे? ऑप्शनल. डिफॉल्ट में क्या होगा? थोड़े डिडक्शंस, थोड़े एग्जम्पशंस नहीं आएंगे. अब वो क्या नहीं आएंगे बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि वो बहुत दैट विल टाइम टेकिंग प्रोसेस. That will take half day time. I need 1-2 hours to teach that. And that I can teach only after I teach you salary, house property, PGBP, capital gains, other sources. वो सब होने के बाद मैं आपको बोलूंगा सैलरी में ये नहीं आएगा, PGBP में ये नहीं आएगा, हाउस प्रॉपर्टी में ये नहीं आएगा, कैपिटल गेन में ये नहीं आएगा, अदर सोर्स में ये नहीं आएगा. अगर आपको ये सब नहीं चाहिए तो बरो टैक्स डिफॉल्ट के अंदर. अगर आपको ये सब चाहिए तो बरो टैक्स ऑप्शनल के अंदर. स्टूडेंट इज टेलिंग, मुझे किस में भरना चाहिए? देख लो, ये सब डिडक्शन लेके चेक करो टैक्स कितना आ रहा है. ये सब डिडक्शन बिना लिए टैक्स चेक करो डिफॉल्ट में कितना आ रहा है. किसमें टैक्स कम है वो उसमें टैक्स भरो. गवर्नमेंट ही बोल रहा है ना ऑप्शनल है. समझा क्या? स्टूडेंट इज टेलिंग, सर एक वंडरफुल डाउट आया मुझे. So whenever I'm telling like this, one student is asking, one student is telling, that means that some doubt which may come in future. उसके लिए मैं बोल देता ऐसा. One student is asking, one student is telling. Your question only, your question I will only tell, your answer also I will only tell. ताकि आपको डाउट नहीं आएगा बाद में. आएगा तो भी आपके पास आंसर रहेगा. अरे हाँ सर ने बोला ना करके. समझा क्या? One student is telling
सर मेरे को एक डाउट है, ये साल मुझे डिफॉल्ट अच्छा लग रहा है तो मैं डिफॉल्ट में टैक्स पे करूंगा, अगले साल मुझे लग रहा है ऑप्शनल अच्छा है, मैं ऑप्शनल में भरूंगा, अगले साल वापस डिफॉल्ट अच्छा लग रहा है तो डिफॉल्ट में टैक्स भरूंगा। ऐसा मैं कर सकता क्या सर? क्या लग रहा है आपको? लॉ इज टेलिंग योर विश, 1 year default, 1 year optional, 1 year default, 1 year optional, choice is all yours except in one case. That one case is you having PGBP income. Having what income sir? PGBP income, मतलब आपके पास PGBP का इनकम है। क्या इनकम है? PGBP का इनकम है। आपने डिफॉल्ट में था, आप क्या करें, डिफॉल्ट में हटके ऑप्शनल में आ गए, डिफॉल्ट के हटके किधर आ गए? ऑप्शनल। उसके बाद बोल रहे मुझे ऑप्शनल अच्छा नहीं लगा, मुझे डिफॉल्ट में जाना है। लॉ बोल रहे जा, दोबारा मत आना। नहीं समझे ना आप लोग? आई विल रिपीट वंस अगेन। ए पर्सन इज हैविंग पीजीबीपी इनकम। शिव तेजा का एग्जांपल ले लो, मेरे पास पीजीबीपी इनकम तो है ना? डाउट है क्या कुछ? थैंक यू सो मच। सो आई एम पेइंग टैक्स अंडर डिफॉल्ट, आई एम पेइंग टैक्स अंडर डिफॉल्ट। मैंने बोला डिफॉल्ट मतलब 1 month बीएससी, डिडक्शन नहीं लिया, एग्जेम्पशन नहीं लिया मैंने, डिफॉल्ट में टैक्स पे कर रहा हूं। उसके बाद लगा मुझे है बेकार है, ये डिडक्शन चाहिए मुझे, मैं क्या किया, ऑप्शनल में आ गया। ऑप्शनल में आने के बाद अगले साल मुझे लगा ऑप्शनल में टैक्स ज्यादा आ रहा है, डिफॉल्ट में कम आएगा, मुझे जाना है। लॉ इज टेलिंग जा जा, डिफॉल्ट में वापस जा, तो जिधर से आए उधर चले जा, बट वापस नहीं आने का। अगर पीजीबीपी का इनकम वाला आदमी है तो, अगर तू पीजीबीपी वाला आदमी नहीं है, अगर समझो तेरे पास सिर्फ सैलरी का इनकम है, अरे समझ में आ रहा है क्या मेरी बात? अगर आपके पास सिर्फ सैलरी का इनकम है, आप बोल रहे हैं ये साल डिफॉल्ट, अगले साल ऑप्शनल, फिर डिफॉल्ट, फिर ऑप्शनल, 2 साल डिफॉल्ट, 2 साल ऑप्शनल, तेरे को जो करना है तू कर। पर अगर तू पीजीबीपी वाला आदमी है, इधर से उधर जंप मत कर, तू डिफॉल्ट में, तू रुक डिफॉल्ट में, तेरे को ऑप्शनल में जाना है, तू जा, जाने के बाद तू बोल रहा है नहीं मेरे को अच्छा लगा, मेरे को वापस डिफॉल्ट में आना है, आजा वापस आ गया तू, तो फिर वापस तेरे को जाने नहीं देंगे। अरे समझा क्या यार? गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया, गर्लफ्रेंड बोल रही है अरे वापस पैचअप करेंगे, हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है लास्ट अपॉर्चुनिटी, इसके बाद दोबारा ब्रेकअप हुई ना तो बस खत्म। समझेगा? अगर पीजीबीपी वाला है तो ठीक है, अब मीनिंग चेंज हो रहा है, छोड़ दो अभी। ठीक है, आपको समझ में आ गया ना फ्रेंड्स? क्लियर ना यार? श्योर? डन, दैट्स द स्टोरी। सो पर्सन हैज गॉट पीजीबीपी इनकम, वो डिफॉल्ट से ऑप्शनल में आ रहा है, आ सकता है क्या? डिफॉल्ट से ऑप्शनल में आ गया, ऑप्शनल से दोबारा डिफॉल्ट में जा सकता है क्या? जा सकता है। अगर एक बार दोबारा वापस चले गया तो वापस ऑप्शन में नहीं आ सकता, जिंदगी में कभी नहीं आ सकता, अगर पीजीबीपी वाला आदमी है तो। पीजीबीपी वाला आदमी नहीं है, फिर करो, उधर जंप करो, इधर जंप करो, उधर जंप करो, इधर जंप करो, जो करना है करो, पर हमको टैक्स भरो, या तो इस पे भरो या तो उस पे भरो, टैक्स तो भरो। स्टूडेंट इज टेलिंग अगर हम नहीं भरेंगे तो जेल तो सीधा नहीं करेंगे, दे विल इंपोज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 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 के साथ भी नहीं भरे तो पेनाल्टी, फाइन फाइन, पेनाल्टी भी नहीं भरे तो जब जाकर जेल में डालते, वो लास्ट ऑप्शन है। सीधा थोड़ी जेल में डालेंगे यार, गवर्नमेंट को पैसे से मतलब है, जेल में डालेंगे तो उल्टा उनको खर्च करना पड़ता। अरे यार बराबर है ना, दे वांट टैक्स फर्स्ट, सी फर्स्ट प्रेफरेंस इज टैक्स। टैक्स लेट हो गया तो इंटरेस्ट भरो, और भी लेट हो गया पेनाल्टी भरो, और भी लेट हो गया तब जाके जेल में डालेंगे, विच इज लास्ट रिसोर्ट फॉर इनकम टैक्स, जो उनको पसंद नहीं है। क्योंकि पर जेल में डालेंगे तो क्या मिलने वाला है यार? कुछ नहीं मिलने वाला है, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, जेल में डालेंगे तो क्या होगा? अगर एक आदमी बेशरम हो गया, उसको लगता है कि भाई जेल में डालना है डाल, मेरे को भरना ही नहीं है टैक्स, तो जो करना है कर, फिर क्या कर सकता है गवर्नमेंट? वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना यार। फ्रेंड्स यू गॉट माय पॉइंट नो? दैट इज हाउ इट वर्क्स। सिंपल सर, अल्टीमेटली वी आर ऑल ह्यूमंस, गवर्नमेंट वांट्स टैक्स एंड वी आर ह्यूमंस, वी वांट आवर नेम फेम एवरीथिंग। अब अपने को पड़ती है जेल जाने के लिए, पेनाल्टी वो सब भरने के लिए अपन तैयार रहते। सिंपल लॉजिक है ना यार फ्रेंड्स? सर इमेजिन करो वी आर वॉकिंग, somebody by mistake has hit us, पैर से मारा है वो, by mistake, जानबूझ के नहीं, by mistake मारा है वो मारने के बाद आपने ऐसा देखा, फिर वो बोल रहे हैं, फिर जब तक एक वापस नहीं दे तब तक शांति नहीं मिलती ना यार।
जब तक एक वापस नहीं देंगे तब तक शादी नहीं मिलता। अगर वो लगने के बाद सॉरी 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 सॉरी, तो अपन क्या बोलते हैं इमीडिएटली, इट्स ओके, तो ईगो सेटिस्फाई हो गया ना। पर अगर वो बोला चल रहे साले I think you got the point. Done. बोलना बेटा। कम भी हो सकता है, बट अब समझो ये डिडक्शंस का जो कॉन्सेप्ट है ना, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 वाला कॉन्सेप्ट, ये हर बंदे को तो आता नहीं। जरूरी नहीं कि हर बंदा लाइफ इंश्योरेंस पे करेगा, हर बंदा मेडिकल इंश्योरेंस पे करेगा, हर बंदे के पास घर है जिस पे लोन है, जरूरी नहीं सबके पास वो हो ना। उसकी वजह से उन्होंने डिफॉल्ट रिजिम रखा है। बट समझो मैंने लाइफ इंश्योरेंस पे कर रहा हूं, मैं सब कुछ पे कर रहा हूं, तो मुझे तो ऑप्शनल अच्छा है। और मैं सच में आपको बता दूं, एवरी ईयर आई एम पेइंग टैक्स अंडर ऑप्शनल टैक्स रिजिम ओनली। मैं डिफॉल्ट में टैक्स पे नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे डिडक्शंस आते हैं। मैं लाइफ इंश्योरेंस पे करता हूँ, बच्चे का स्कूल फीस पे करता हूँ, एंड आई ऑल्सो हैव ए हाउस ऑन विच आई एम पेइंग इंटरेस्ट ऑन द लोन व्हाट आई हैव टेकन। मैंने घर बनाने के लिए लोन लिया जिस पे इंटरेस्ट पे किया, घर बनाने के लिए लोन लिया जिस पे इंटरेस्ट पे कर रहा हूं मैं, उस इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है। किस में मिलता है? सिर्फ ऑप्शनल में, डिफॉल्ट में नहीं मिल रहा है मुझे। वो सब डिडक्शन लेस करने के बाद मेरा टैक्स ऑप्शनल में कम आ रहा है, तो मैं क्यों डिफॉल्ट में जाऊं? तो गवर्नमेंट एक बेनिफिट दे रहा है। अगर आपको लगता है आपका डिडक्शन ज्यादा है तो आप इसमें पे करो, वरना इसमें पे करो। गवर्नमेंट बेनिफिट दे रहा है। अगर ये बेनिफिट दे रहा नहीं है तो सीधा टैक्स नेक्स्ट लेवल लेंगे ना। आपको देख के लग रहा होगा 30% टैक्स बहुत ज्यादा है ना सर करके। इंडिया में एक टाइम पे टैक्स 95% था बिफोर इंडिपेंडेंस। व्हेन ब्रिटिश वाज रूलिंग अस, दे यूज्ड टू कलेक्ट 95% टैक्स। आप बोलेंगे कमाएंगे नहीं तो खाना कैसे खाएंगे? 100 रुपए कमाएंगे तो 95 रुपीज गवर्नमेंट को पे करना पड़ता था। उसकी वजह से तो वो क्रिकेट मैच खेले वो लोग। लगान मूवी, लगान देखे ना आप लोग? आमिर खान, अरे पठान नहीं रे, लगान। आमिर खान का मूवी ना, वो लोग मैच खेलते ना सर, वो किसके लिए मैच खेलते? टैक्स के लिए। सिंपल लॉजिक। एंड स्लोली दैट 95 रुपीज टैक्स बिकेम 70, 60, 50, 40, 30, ऐसा कम होते गया। बट ये 30 में भरने का मन नहीं करता, वो अलग बात है, बट टैक्स तो वैसे कम ही है, बट वो भी भरने को मन नहीं करते। अपने को लगता है ना यार, हार्ड अर्न मनी है, इतना मेहनत करके कमा रहे, क्यों 30% गवर्नमेंट को दे? वैसे लगता है, बट गवर्नमेंट बोलती है भरो, आपकी जिम्मेदारी है। आप रोड्स एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एंजॉय कर रहे हैं, डिफेंस एंजॉय कर रहे हैं, प्रोटेक्शन है, सेफ्टी है, सब कुछ है आपके पास, तो भरो। आप बोलेंगे हर 4 बंदा थोड़ी ना भर रहा है, मैं जितना एंजॉय कर रहा हूँ गरीब आदमी भी उतना ही एंजॉय कर रहा है, तो उसको भी टैक्स भरना चाहिए ना। गवर्नमेंट बोलेंगे इनकम टैक्सेस प्रोग्रेसिव इन नेचर। अगर ऐसा बोलते गए तो हो गया ना यार। इन इंडिया 10% पॉपुलेशन is contributing to 90% of tax. If you understood what I want you to understand. In India, 10% population is contributing to 90% of tax in India. समझे क्या आप लोग मेरी बात? उनको भरना ही पड़ेगा यार, ऑप्शन नहीं है यार। बिकॉज द मोर इनकम द मोर टैक्स, लेस इनकम लेस टैक्स। इंडिया में टैक्स नहीं भरने वाले ज्यादा है, भरने वाले कम है। फ्रेंड्स, लास्ट ईयर 10 करोड़ रिटर्न्स वर फाइल्ड। 10-12 करोड़ लोग रिटर्न फाइल करे लास्ट ईयर। इंडिया में पॉपुलेशन कितना है? 140 करोड़ है, उसमें 10-12 करोड़ लोग रिटर्न फाइल कर रहे। तो 12 करोड़ रिटर्न जो फाइल कर रहे हैं उसमें 3-4 करोड़ लोग टैक्स नहीं भर रहे, 7-8 करोड़ लोग टैक्स भर रहे इंडिया में। सच्ची में, मजाक नहीं कर रहा हूं, सच बोल रहा हूं। स्टूडेंट हिस्ट्री नहीं, हमको यकीन नहीं हो रहा सर, आप जो बोल रहे हैं हमको लग रहा है कि इतना कम लोग थोड़ी ना रिटर्न फाइल करेंगे। हमको तो लगता है कि कम से कम 50 करोड़ लोग तो टैक्स भरेंगे इंडिया में। ऐसा लग रहा है क्या आपको? दिख रहा है क्या? ये असेसमेंट ईयर 23-24 का है जो ऑलरेडी खत्म हो गया। कितने लोग रिटर्न फाइल करें? 8 करोड़ 22 लाख। उसमें आईटीआर प्रोसेस अभी तक 7 करोड़ 94 लाख का हो गया। मतलब सिर्फ 8 करोड़ लोग रिटर्न फाइल करें इंडिया में। इंडिया का पॉपुलेशन क्या है और कितने लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं? आई थिंक यू अंडरस्टूड सर। क्लियर है क्या?
तो सिंपल लॉजिक है यार. सी ए पर्सन वाज डूइंग ए सैलरीड एम्प्लॉय, छोटा सा जॉब कर रहा है, महीने को 10-15 हज़ार 20 हज़ार कमा रहा है, वो रिटर्न क्यों फाइल करेगा, क्यों टैक्स भरेगा यार. और बहुत सारे लोग ऐसा है इंडिया में जो कमाते 5 लाख 10 लाख के ऊपर, बट वो टैक्स भर ही नहीं रहे. जिस दिन पकड़े गए तो उस दिन खत्म, और जब तक नहीं पकड़े गए तब तक मजे कर रहे. I'll tell you one small example what has happened. There is one vada pav center from Pune only. आप गूगल में टाइप करें तो भी उसका केस आएगा. 2-3 साल पहले एक इशू हुआ है. एक वड़ा पाव सेंटर पुणे में दिन में 1000 वड़ा पाव बेचता है वो, और 1 रुपए का भी टैक्स नहीं भरता है. हाँ बराबर वही है. तो 1 रुपए का भी टैक्स नहीं भरता है वो. एंड व्हाट हैज हैपेंड इज वन डे इनकम टैक्स ऑफिसर वेंट देयर टू हैव वड़ा पाव एंड ही गॉट ए डाउट. ही वाज शॉक्ड कि इतना बिजनेस कर रहा है, इतना लोग आके वड़ा पाव खा रहे हैं, ये टैक्स क्यों नहीं कर रहा है बंदा. देन ही वाज शॉक्ड टू सी दैट टैक्स पे ही नहीं कर रहा है. रिटर्न फाइल कर रहा है, उसमें इनकम जीरो दिखा रहा है. इनकम जीरो मतलब इनकम 4-5 लाख दिखा रहा है जिसमें टैक्स जीरो आ रहा है. समझ में आ रहा है क्या. What these guys have done is they planned perfectly, and in the evening around 7:30 they conducted income tax raid. इनकम टैक्स रेड मतलब पता है ना, पिक्चर में देखे ना बॉलीवुड मूवीज में या साउथ के मूवीज में दिखाते ना. मतलब बॉलीवुड में थोड़ा ज्यादा दिखाते, साउथ में थोड़ा अलग दिखाते. बिकॉज साउथ इज क्लोज टू नेचुरलिटी, बॉलीवुड इज क्लोज टू अलग लेवल है वो. ठीक है, समझ गए ना आप लोग. आजकल तो आप लोग भी तो साउथ का मूवीज देख रहे हैं यार ज्यादा. ठीक है, नेक्स्ट. सो नाउ व्हाट इज द पॉइंट हियर. मैं क्या बोल रहा था. ये वड़ा पाव वाला क्या किया, 7:30 को रात में इनकम टैक्स रेड हुआ था. ऑफिसर ने क्या किया, ही वेंट एंड सर्च्ड एवरीवेयर इन हिज ड्रॉ, चेकिंग व्हाट इज द कैश करेंसी इन्वॉल्व्ड. कैश कुछ मिला ही नहीं उसको, कुछ भी कैश नहीं मिला उसको. देन व्हाट द ऑफिसर हैज डन इज, उनका जो टीम आया 4-5 लोग, दे काउंटेड नंबर ऑफ पेपर प्लेट्स इन द डस्टबिन. डस्टबिन जो पेपर प्लेट होता है ना, उसको काउंट किए. उन्होंने बताया 6 बजे तुम्हारा काउंटर चालू हुआ, अभी टाइम 7:30 हो रहा है, 1.5 आवर में इतना पेपर प्लेट है. रात में 10 बजे तक तुम्हारा दुकान चलता है, तो 6 to 7:30 में इतना हुआ, तो 7:30 से 10 o'clock कितना होगा, शाम में इतना होगा, तो सुबह कितना होगा. तो बंदा बोला ये सुबह का कचरा है, ये सुबह का कचरा नहीं है, 4 बजे ऑलरेडी पीएमसी वाले कचरा निकाल दिया, वो कैमरा लगे है, देख लो. समझ में आ रहा है कि आपको क्या हुआ. मतलब शाम का टर्नओवर इतना है तो सुबह कितना है, एक दिन में इतना है तो 30 दिन में कितना है, 30 दिन में इतना है तो पूरा साल का कितना है, इतना तुम्हारा टर्नओवर है तो इतना प्रॉफिट कितना हो सकता है, तो भर टैक्स. एक्चुअल में हुआ है ये, मैं स्टोरी नहीं बोल रहा हूं, ये एक्चुअल में हुआ है. With one vada pav center in Pune, they collected tax like this. If you type in Google Pune vada pav plus income tax, you will get the answer. Friends, getting my point, everybody? All of us. अभी वो वड़ा पाव सेंटर में पेपर प्लेट बंद कर दिए, अभी प्लेट्स दे रहे जो वापस वॉश करेंगे. एक्सपीरियंस सिखाता ना सर. डन. I think we are clear with what we discussed till now. Friends, अरे मैटर समझा था ना बाद में, वही पूछ रहा है क्या. ठीक है सर, क्लियर है क्या यार, बोलो ना यार. डिफॉल्ट अच्छा है, ऑप्शनल अच्छा है. हाँ, डिपेंड्स. वंडरफुल, वेरी गुड आंसर. अगर आपका कोई दोस्त बोले ना, आपको दोस्त मतलब जो भी है, आपका दोस्त जब कोई और है या कुछ भी है, वॉट एवर इट इज, इफ ही इज टेलिंग डिफॉल्ट ही अच्छा है, मुझे लगता है डिफॉल्ट ही अच्छा है, वो तेरे को लगता है, उसको बोल देना नो फीलिंग्स एंड इमोशंस ओनली. वेरी गुड. सो इज डिफॉल्ट गुड, ऑप्शनल गुड, इट डिपेंड्स. कितना डिडक्शन से कितना एग्जामिशन, उस पर हम डिसाइड करेंगे कौन सा अच्छा है. और डिफॉल्ट में कोई कैटेगरी नहीं है, वो 3 कैटेगरी जो है वो सिर्फ ऑप्शनल में है. सबको क्लियर है? एवरी वन सर, पुट द हेडिंग डिफॉल्ट टैक्स regime. Default tax regime. Default tax regime under section. Default tax regime under section 115 BAC. अब ये मत सोचो ABC करना था, इसको इजी रहता था. सोचे ना ये भी, पता है मुझे 2-3 लोग सोचे ये भी, क्यों ऐसा ये उल्टा करती है क्या है यार. फर्स्ट पॉइंट,
certain, 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 first point, certain deductions and exemptions, certain deductions and exemptions, certain deductions and exemptions are not allowed. Certain deductions and exemptions are not allowed under default tax regime. Certain deductions and exemptions are not allowed under default tax regime. दोस्तों क्लियर है एवरीवन? नेक्स्ट पॉइंट, there is no age criteria. Next point, there is no age criteria there is no age criteria in section 115 BAC. There is no age criteria in section 115 BAC. Clear? लिखो नीचे, चलो नीचे लिखो, अप टू 3 lakhs टैक्स रेट, टैक्स रेट करके लिख के नीचे लिखो अप टू 3 lakhs कितना है बेटा, ऐसे लिखना है अपने को, अप टू 3 lakh नील, 3 lakh to 6 lakh कितना बेटा 5%, 6 lakh to 9 lakh 10%, 9 to 12 15%, 12 to 15 20%, and finally above 15 lakhs 30%. Clear है क्या everyone? Next point. Next, put the heading optional tax regime. Optional tax regime. Write down. हाँ नहीं वो लिखा हूँ, नेक्स्ट लाइन लिखो, फर्स्ट पॉइंट राइट, an individual can shift out of what beta, shift out of default tax regime. An individual can shift out of default tax regime. An individual can shift out of what beta? Default tax regime. Clear? Next point. In default tax regime, all exemptions, in default tax regime, all exemptions and deductions are allowed. Sorry, मैं क्या बोला? I'm so sorry. In optional tax regime, change that. No, sorry. In optional tax regime, change that. In optional tax regime, all exemptions and deductions are allowed. Next point. If a person does not have PGBP income, if a person does not have
PGBP income, then he can shift between he can shift between then he can shift between default and optional, then he can shift between default and optional, he can shift between default and optional year by year, he can shift between default and optional year by year, हर साल चेंज कर सकता है चाहिए तो, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, if a person is having PGBP income, then he can opt for optional. Wait. We'll write like this. Then he can opt out of default. Then he can opt out of default. Then he can opt out of default and can opt out of optional. And can opt out of optional. Full stop. Once he withdraws from optional, correct now? Once he withdraws from optional, then he has to continue. Then he has to continue in what beta? Default. Then he has to continue in default every year. He has to continue in default every year till he has PGBP income. समझे क्या? Every year till he has PGBP income. ये पॉइंट लिखाने का रीजन क्या है? आप बाद में आपको डाउट आएगा, अगर PGBP इनकम नहीं है तो फिर जाना ऑप्शनल में, डिफॉल्ट में स्विच करो जब मन करे तब. ठीक है ना बेटा? सबको समझ में आया ये पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट, टैक्स रेट्स अंडर ऑप्शनल. Tax rates under optional tax rates under what beta? Optional is based on tax rates under optional is based on the age criteria. Is based on the age criteria. क्लियर है? चलो नीचे टेबल बना दो, ये नॉर्मल, सीनियर, सुपर सीनियर. कम ऑन, गेट दिस टेबल रेडी.
फ्रेंड्स डन? चलो ये एग्जाम्पल ले लो बेटा प्लीज, ये एग्जाम्पल लिख लेना प्लीज. हो गया बेटा? कैन आई स्क्रॉल? ये भी एग्जाम्पल आपको ऐड करना है उसमें नीचे. हो गया? नीचे एक नोट लिखो बेटा. Which option is better? Which option is better? Purely depends on
which option is better purely depends on exemptions and deductions available. Purely depends on exemptions and deduction available. Purely depends on exemptions and deductions available. And the tax rate. And the tax rate. बराबर है ना? ओके, डिफॉल्ट में ऑप्शन में टैक्स रेट अलग अलग है दोनों में. फ्रेंड्स, आर वी क्लियर? एवरीबॉडी? चलो बेटा, सर प्रीवियस पॉइंट में इसमें टैक्स कितना आया था डिफॉल्ट में? 60,000. बराबर है ना? ऑप्शनल में कितना आया? 52,500. तो कौन सा अच्छा है बेटा? ऑप्शनल अच्छा है. बट जब 2 लाख की डिडक्शन था तब तो डिफॉल्ट अच्छा था. फ्रेंड्स, नाउ वन इंटरेस्टिंग पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स, वन मोर नोट, what I'll tell you is that on tax payable, HEC is added. HEC stands for Health and Education Cess. HEC का मतलब क्या है बेटा? Health and Education Cess. Sir, apart from tax, गवर्नमेंट इज कलेक्टिंग सम एक्स्ट्रा अमाउंट कॉल्ड HEC. उसको उनको नाम क्या दिया उसने? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. गवर्नमेंट इज टेलिंग वी आर कलेक्टिंग सम एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम यू एंड दिस एक्स्ट्रा मनी विल यूज इट फॉर प्रमोटिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. सर व्हेनेवर, सर सुनो ना एक बार, छोड़ो लिखना, छोड़ो एक सेकंड. सर व्हेनेवर गवर्नमेंट इज कलेक्टिंग सम एक्स्ट्रा अमाउंट फॉर अ स्पेशल पर्पस, whenever government is collecting some extra amount for a special purpose, they'll call it as a cess. इसलिए उसका नाम है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. स्पेशल पर्पस के लिए. क्या है स्पेशल पर्पस? हेल्थ एंड एजुकेशन. एट द रेट ऑफ 4%. 4% किस पे? टैक्स पे, इनकम पे नहीं. 4% किस पे? टैक्स पे. मतलब जब यहां पे 60,000 है, उसको 60,000 नहीं भरना पड़ेगा, उसको भरना पड़ेगा 62,400. समझेगा बेटा? 4% एक्स्ट्रा ले रही है गवर्नमेंट एंड दे आर कॉलिंग दैट एज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. आर वी क्लियर विद दिस? एवरीबॉडी सर? नेक्स्ट, वन मोर इंटरेस्टिंग नोट. लिसन, देन विल राइट. दैट इज एज पर सेक्शन 288A, टोटल इनकम. सर टोटल इनकम मतलब बिफोर डिडक्शन, आफ्टर डिडक्शन है? आफ्टर डिडक्शन. टोटल इनकम is rounded off to nearest multiple of 10. That means if the total income is 1,03,402, we'll make it as 400. 408, we'll make it as 410. 406, 410. 404, 400. 405, 410. मतलब लास्ट नंबर इज 5 एंड अबव, विल टेक इट टू नेक्स्ट 10. लास्ट नंबर 5 से कम है तो पिछले 10. समझेगा बेटा? फ्रेंड्स, नेक्स्ट, इन द सेम लाइन्स they also told as per section 288B. 288 what beta? B. Tax payable is rounded off to nearest multiple of 10. मतलब इनकम को भी राउंड ऑफ करेंगे हम, टैक्स को भी राउंड ऑफ करेंगे. और कौन सा टैक्स को राउंड ऑफ करेंगे? सेस ऐड करने के बाद जो टैक्स है उसको राउंड ऑफ करेंगे. फॉर एग्जांपल सर, इसमें फिगर कितना है? 52,500. इसको अच्छे से ऐड करना पड़ेगा. 4% निकालो. 4% करके ऐड करके बता रहा, बोलो. 54,600 एग्जैक्ट आया क्या? ठीक है, 54,600 लेंगे. अगर समझो 54,606 आया, 610 कर देंगे उसको. 54,602 आया, 600 करेंगे. 606 आया, 610 कर देंगे. समझे क्या ये पॉइंट? अरे सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें. समझा आए क्या? एवरीवन टेक दिस. ऑन टैक्स पेएबल, on tax payable,
HEC is added on tax payable. HEC is added on tax payable. HEC is added HEC is added at 4%. HEC full form क्या है बेटा? Health and Education Cess. Good. Next point. As per section 288A, 288A, as per section 288A, total income is rounded off. Total income is rounded off. Total income is what beta? Rounded off to nearest multiple of 10. Total income is rounded off to nearest multiple of 10. Next, as per section 288B, 288B, tax payable is rounded off. Tax payable is rounded off. Is what beta? Rounded off to nearest multiple of 10. That's it. I think we are clear till here. सबको समझ में आया क्या बेटा यहाँ तक? पक्का बेटा? टैक्स रेट कैसे करना समझ में आया? Done. Tomorrow we'll solve more questions on this and we'll discuss more concept on this. But one small request is that please carry your calculator to the class. सब लोग calculator लेके आओ please. Thank you so much beta. See you tomorrow. Bye bye. Thank you guys.